LeetCode. Number of ways to assign the edge weight. There is an undirected tree with n nodes labeled from 1 to n. Rooted at node 1, tree represented in the array. Uh, there is an edge between node ui and vi. Initially, all edges have weight of 0. You must assign each edge of weight either 1 or 2. The cost of path between any two nodes u and v is total weight of all edges in the path connecting them. Select any node at maximum depth. Return the number of ways assigned the edge weights in the path of node 1 to x such that total cost is odd. Since the answer may be large, return the modulo of 10 to the power of shade, power of say. What kind of question is this? Tree question? The path from node 1 to node 2 consists of one edge. What do we call as edge? Is this line called as edge? The connecting line between them is called as edge, right? So, do we really only have like two edges? Maximum depth is 2, and with node 4 and 5 at same time there, each node can be selected for processing. For example, the path node from 1 to 4 consists of two edges, which is like 1 to 3, 3 to 4. Why not 3, 5, and why not 1, 2? I mean, for the one which is root node has the edge of 2 and 3, right? Then why the heck he is only like calculating for the right hand side? Assigning the weight 1 and 2 or 2 and 1 results in the odd. Ah, I have to only see for the even thing. For example, the path from node 1 to node 4 consists of two edges 1 to 3 and 3 to 4. Assigning weights 1 to 2, 2 to 1 results in the odd cost. Thus, the number of valid assignment is 2. Oh, you mean I have to calculate in such way that my edges count should be like in the even number, I guess. It can go to till 10 to the power of 5, and edges can be n minus 1, n minus 1. Edges of n minus 1. I have to form a tree now. Share. Let me console log and see what we're getting right now. How do we form a tree now?
Is this some sort of binary tree or like some different kind of tree? Uh, this is like there is an undirected tree. What does undirected tree means? N nodes labeled from 1 to n were rooted at node 1. The tree is represented by the 2D integer array edges of len minus 1, where edges of I is u of I, v of I, I don't know what the fuck is this. It indicates that there is an edge between the u of I and v of I. Initially, all edges have the weight of 0, and you must assign each edge a weight of either 1 or 2. The cost of path between any two, total weight of all edges in the path connecting them. So select any node x and max at maximum depth and return the number of ways to assign the weight. In such that they are asking for the maximum depth. You have to calculate the maximum thing and multiply it with the 10 to the power of 10 to the power of 7, I guess. I don't know. 10 power 7, I guess. How are we even going to calculate the answer for this thing? Like, I'm not even able to understand the question right now. Which is the first part of solving a problem. First, we need to understand the question. So it does say like it is an undirected tree with an n nodes and labeled from 1 to n. Rooted at 1. Rooted at 1. I have to find the maximum depth. Select any node x at maximum depth. Select any node at x at maximum depth and return the number of ways to assign the edge weights in the path. So my maximum depth, if my maximum depth is 2, then what could be the answer for that? 2. So we have to find the maximum depth. If my maximum depth is 1, then what is my total weight? 1. And if I have a maximum weight of maximum depth of this thing, so do you have to find a minimum and maximum out of it? Maybe I'm taking the question a bit wrong, I guess. Should I flatten my array then? I can do it like I can flatten my array and find the minimum and maximum. From there, if you find the maximum value, no, that is not going to solve my problem. Let me imagine if we are having a tree, the number of elements depends on that thing. So let me take this value now for now, and what do you call that thing? X carry draw. And here I'm going to form the tree now on my own without any following any rules, just for the sake. If we are going to take the one as parent, then we are going to take one as parent here, and now we are left with the 2 and 3. So imagine my 2 will be here and 3 will be here, and now we are ignoring the 1 since we already took the 1, so we are ignoring, and even 3 we are ignoring, and now we have 4 which is going to come and sit here, and we have 3 again. Oh shit. So how much maximum edges can you see here? Like on here, like I can see only two things dividing. Either it can be on this side or it can be on this side. I don't know how they found it, but maximum depth is 2 with nodes 4 and 5 at the same depth. Either node can be selected for processing. For example, the path from the node 1 to node 4 consists of two edges, 1 to 3 and 3 to 4.
Come on, give some hints, man. Like, what the fuck is this? DFS to find each depth of the node from the root. Find the maximum depth. Ah, shit. Number twos does not affect the parity. We need an odd number once along the path. Number of ways to choose odd count of one among the maximum depth is 2 into maximum. Ha, what is this? 2 to the power of maximum depth minus 1 is my maximum depth. How do you find a maximum depth? Let me flatten my array. Edges dot array dot flat, I guess. How do you flatten array in JavaScript? I hope I did it well. Or you don't need array since we already have the array. But if I try to print my thing now, that day how did I calculate the maximum depth? I think we can't do it this way. Until my root not equally just I mean if my root is null then you return otherwise you are going to do maximum depth again. Maximum depth is going to be maximum depth of dot left and maximum. Maybe, maybe I need to take maximum depth of left and maximum depth of right. Maximum depth right is going to be maximum depth of root dot right, and the formula says is like we have to calculate what the fuck is that? Where is that 10 to the power of, here it is, 2 into, what the hell is this symbol? Oh, I see. So we have found the maximum depth. Now we have to return my 2 into math of maximum depth left and maximum depth right minus 1 should be outside or inside. Maybe they should written my answer. Maximum depth is going to be my flattened array. I don't know. Shit. My flattened array can't be. I do have to form a tree now. How the fuck do I form a tree? If I pass my flattened array, I will get an error. It does not have left and right. And no. How do we do this now? I need to form the tree anyway. Like.
How do we form a tree from an array? First, I need to learn that thing, which is like I never did that thing. Did they ask me to? I don't know. Maybe we need to form a tree, and from there, then we have to calculate the root and value, I guess. Hmm. We don't have the axis of flat and I mean dot left and dot right. Since we have an undirected of center. Nah, bro. I never worked with an undirected. What the hell is undirected tree? Oh, I haven't reached the graph topic yet. Oh, shit. We have to read graph theory for that. It is in simple terms, you can reach any point in the network, but there is only one single path to get for any specific point or another. Connected, all the nodes are linked with no isolated points. Acyclic, no loop, no circles, no path going to the endless loop. Rules of edges, if tree has total n nodes, it will be always have the exactly n minus 1 edges. And we have to calculate the edges, right? And like he's saying like if tree has a n nodes, then it will always have exactly n minus 1 edges. Yeah. Then we have to calculate the total n nodes in a tree, I guess. Uh, if I'm right, node is like this thing right here. But if you see that thing as a node, then we might be getting a big number, I guess. Like this is also a node. This is also a node. Or maybe this is a parent, this is a parent, this is not, this is not. Here we only have one. But the formula says like, what did it say? It say like total number of edges is equals to my total number of nodes minus 1. Rules of edges. If a tree has total n nodes, it always have exactly n minus 1 edges. So our question was to calculate the edges. Break down how it compares a directed tree where lines have one way arrows. Give you example.
Give you examples of real world things. The function like trees, like family trees or file system. Explain how computers use the organized source data. This question is completely fucking. Explain how computers use. Explain me how computer uses this or this to organize and search data. What do you mean by unpack? Oh my god, there's a graph. Go to hell, bro. Maybe I should try looking for a easy graph problem first, then I will do some stuff in the for the graph. I don't see graph anywhere. Will it be included inside my tree? I don't see any graph. Give me the easy question first so I can understand like how the graph works. Like what is difference between the tree and graph? Yo, why I can't find the graph? Am I blind or what, bro? What the fuck? Graph theory. Here it is. Well, what does this mean? Find the town judge. Let me try this. If I'm able to come up with some solution on in in a town there are n people labeled by one to n, and there is a rumor that one of these people is judges secretly secretly a town judge. If town judge exists, then the town judge trusts nobody. If the town judge exists, then town judge trusts nobody. Everybody except the town judge trusts it. There is exactly one person that satisfies the property of one and two. Is given and trust. So you are saying like the what do you call that thing? So graph will be like every time given in 2D array. How do I mean like how do I iterate on this 2D array for the graph? Then such trust relationship does not exist. Return the label of town judge if town judge exists and can be identified. Return minus or return minus one otherwise. What the hell is this? Well, let me ask AI. Oh. किशमिश
To solve the graph and tree problems in LeetCode using JavaScript, we don't need to learn everything about the graph at once. You will need to master the main patterns representing the graph and traversing, moving through it. Here is your ultimate beginner guide, crushing this problem in JavaScript. How graph looks in the JavaScript. LeetCode usually gives you a list of connection called as edge list. Solve the problems. You must first convert the adjacency list using a JavaScript object or map. So, what the fuck is this? What the hell did you do, man? Restructured my edges to U and V. Oh, this is what the fucking thing was asking me for UI and UVI. Now I understand. Like, remove this line if graph is directed. Remove this line if graph is directed. Oh, this is for undirected graph. So for undirected graph, there will be only one value. What kind of thing? Oh, for u index we are pushing the v value. For v index we are pushing the u value. This is like creating a path and some sort of object. If my graph of u or graph of v does not exist, then it is empty. If my graph of v and the graph of v does not exist, and graph of v will be like empty. But it does not exist, then you're returning it as like an empty thing. Understandable. The golden rule tool DFS depth first search to solve almost any tree or a graph problem. Use this technique called as DFS. It means you pick a node and go to the depth possible along the path, and then back up using a set called visitor. Let's see. So for graph problems, we need a visitor thing in order to keep the note of like till where we have went, and like this case if we already saw this node stop. Mark the node as seeing the neighbors graph of node neighbor of neighbors and DFS of neighbors. DFS of one really sorry. So strategy to identify undirected graph. If problem asks you to verify if graph is valid undirected tree, your code only needs to check only two. No cycles. Use a visitor set. Ensure never run into a node you have already seen, excluding the node you have just come from. Fully connected, your visitor dot size at n must be equal to the total number of nodes in n. Visitor size should be equal to the n number of nodes in a graph. So if you want, I can show you the exact JavaScript solution for famous graph valid tree. Number of connected components. Paste your current LeetCode problem description. I don't want to do that. Yo, what's up? Just struggling with the LeetCode. Nothing much. How about you, man? Are you good? How is your grind going on? I got I got an online interview or something. I don't know, like maybe coding assessment. But I have it on like on 13th, coming 13th, I guess. On 13th, yeah, 4 p.m. to 5:30 p.m. Have an coding test as associate software engineer. The fuck is yeah. Finally, I got an mail from something I applied now. So now I have to understand how this thing is working. In order to build a graph, how we are going to build a graph and traverse through it. What are the patterns that are present in the graph? Kind of questions in LeetCode and in general coding questions. Tell me how to do it step by step
in JavaScript. Build a graph. LeetCode almost never gives you a ready to use graph. They give you a pair of array of pairs called as edges. You're cool. That's good, man. JavaScript and compiler, and we are going to write some code. Now we are going to form and whole as graph. If my edges is given, then graph build graph. We are building a graph. Where is build graph? There is build graph. I don't see build graph anywhere. What the fuck? You confuse me, bro. What the hell? They don't give you build graph. You have to write yourself. Yeah, write it. That's what I was trying to ask you. So paste or write the build graph function here. You have a graph. If my graph is less, if my graph, what is this? For each element, we are going to run like what if my n is not. Don't panic. Set trick if you need to total count. Oh, that is what you are doing down. Wait a minute, bro. Confusing me right now. Let me give you a constraint. Let me give constraint so you don't get confused. So imagine this is my constraint right now. Sorry, this is the input. So now tell me, what are the steps involved to traverse? Yeah, you know what kind of questions are. So teach me the method. Don't just give the code, man. The formatting is nested arrays of arrays and technique in a specific, usually structure one of three things: coordinates, pairs, intervals, start and end, graph, edges. Look at the outer container. Think of main array as shelf holding boxes. So unpack the inner items. Once you hold the specific box, you can look inside it. In one and in item 0 is 1 and item 1 is 3. Item 0 is 1 and 1 is 3. Yeah. And item 02, item 0 is 2 and item 01 is 3. Drag the rows and columns. To access any specific number, you need you need two addresses: array of rows, array of columns. Standard traversal code blueprint. Here is how you actually write the thought process in JavaScript. Notice how we use array destructuring in the second example to make the code highly readable. Mhm.
So you're using traditional method of nested loop, which is like first is like my row and second is like my column. It's like column and rows. And we have a modern destructuring recommended for interviews. If you know subarrays always contains exactly two items, then you can unpack them instantly. Concept destructuring, yeah, concept first and second of intervals. There are first element and last element. Now interview allows this data structure because it treats your ability to manipulate the data and complete a timeline. Here is here are three most common types of questions. Overlapping interval. The fuck overlapping interval comes for this question. What the hell a question to do with the habit? Meeting goes from 1 p.m. to 3 p.m. Meeting goes from 2 p.m. to 3 p.m. Does do they conflict? You sort the array by start times and then compare the start time of current meeting with the end time of previous meeting once they overlap. Famous problems, merge intervals, meeting rooms, non-overlapping intervals. Matrix traversal grid pattern, array representation, just board and pixel gradient, graph adjacency based network pattern. Pair represents a connection between node is connected and a trick travels through this pair and build up a map. You can talk to whom often using breadth first search or depth first search. They must find if path exists in graph post schedule. We are trying to graph things. What the hell is this? What kind of bug is this? Oops. Where is that thing? Yeah, got it. Already there.
Hmm. Okay. Where the fuck is that? Hell nah. I have to do it again. Okay. Let's keep an impossible target like nobody can. It's never gonna happen. And this is my like count, I guess. Cool. Now I have to focus on doing graphing. And graph. It says understand the code. Adjacency list. Computer can't easily look up the connections from raw list pass. We need to convert it into a map or object like this. Node 1 connected, node connected, node 3 connected, node 1. If you can travel both ways, just look up. Yeah, bro, just okay. You're saying like if my edge is this, what the fuck is it? From where did it come? Points edges is supposed to be the 1, 3, comma 2 and 3. So this is my. So we have to write a function build graph. We are going to pass the edges, which is my 2D array, and now we are going to maintain an new map. You understand? And now we are going to destructure it once U and V. I feel like
Uh, I'm kind of remembering what my math teacher used to teach me in school. So in my graph as you when you set, you can't do it. If it does not have, then you set it. It says you and you're going to set this. Oh, we have to set an empty array. But why are we setting an empty array? And we are going to get the graph of u and push v. Now we have the edge from u to v. Now we have to establish the same for the what do you call that thing? If my graph, if my graph of as v, if not, then graph dot set of v is empty array and graph dot get of v dot push u. Am I right or not? Okay. After that, we are going to return my graph. Then what are we supposed to do with the graph now? Did we really make a graph? I mean, this is how we make a graph? Oh, hell no. So this is what like u and v, what does u and v means in the graph? Graph, bro, graph, what the fuck is graph? In graph theory, u and v don't stand specific word. They are like arbitrary variables used as placeholder. Why the fuck you can use a and b, bro? What the fuck you went for like u and v? What does u and v mean then? F means like edges, vertices, and E represents the connections. But you're using U here. U, what is U then? Ah, bro, fucking crazy. Now we have our what do you call the thing? Call it to create a graph object. It's my build graph. But we did not have the N, bro. Yeah, you figure out directly from edges array. Every single edge in that pair means every node in the graph must be shown up inside array at least once. The no end build graph. I don't see what are you doing right now. Like you're doing same thing again. If there is no end, then I have to do it like this. I have to push empty array. Now safely push the connections. How to traverse without end? Since you don't have end, you can't use a classic for loop. Instead, use object.keyGraph. Grab an array of every single unique node that your build graph function found. So build graph unique. Oh my god, this is fucking hard, bro. This is fucking hard.
Shall I watch a tutorial video on how to use a graph? What the fuck? Let's cover one of our 10 pro tips for working with cursor agents. वेलकम टू द फर्स्ट लेसन ऑफ ग्राफ्स इन जावास्क्रिप्ट। ओके, तो ये जो पूरी प्लेलिस्ट है, मैं इसमें पूरे ग्राफ के कॉन्सेप्ट्स फंडामेंटल से लेके एडवांस जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे लीड कोड पे या जो भी, उसको आप अगर इस प्लेलिस्ट को ढंग से फॉलो करो तो आप उनको जावास्क्रिप्ट में सॉल्व कर सकते हो। और हम कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स को बिल्ड करने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो वी विल स्टार्ट विथ द बेसिक्स, ओके, एंड कुछ ऐसे रैंडम क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जो कि आपके ट्रावर्सल के फंडामेंटल्स एंड हाउ टू रियली डू एनी स्मॉल ऑपरेशंस ऑन द टॉप ऑफ ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर इस पे बेस्ड होगा, रिकर्सन पे बेस्ड होगा, ताकि जब भी आप आगे एडवांस्ड एल्गोरिदम से प्रॉब्लम करोगे तो वो आपको ढंग से समझ में आएगा। एंड बिलीव मी, जो भी ये बड़े टेक जायंट्स एंड फैंग की कंपनीज होते हैं, उनको फंडामेंटल्स से बहुत ज़्यादा लगाव है। तो दे विल आस्क एवरी प्रॉब्लम इन सच अ वे विद अ फॉलो अप, ओके, जो कि आपका तभी सॉल्व हो पाएगा इन दोज राउंड्स इन सच क्रिस्प प्रेशर सिचुएशन, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स फंडामेंटल लेवल पे बिल्कुल क्लियर है, ना कि आप जाके बस एक क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हो और डायरेक्ट एक सॉल्यूशन को देख रहे हो, वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। ओके, सो लेट्स गियर अप टू द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस प्लेलिस्ट। पहला लेसन होगा वो होगा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन इन जावास्क्रिप्ट, जो कि हम थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जान के इमीडिएटली हम कोड पे मूव करेंगे एंड विल सी कि ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को कैसे जावास्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग टू मेथड्स। तो उससे पहले हम बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो ग्राफ एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, राइट? तो इट इज़ अ नॉन लीनियर। इट मीन्स कि जो हमारा एरे में जो मेमोरी एलोकेटेड था वो एक कंटिगुअस था, राइट, और एक लीनियर फैशन में था, राइट? सिमिलरली जो लिंक लिस्ट होता है हमारा, राइट, इसको भी आप बोल सकते हो कि एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स नहीं होता है। बट हमारा जो ग्राफ होता है, ग्राफ में क्या होता है कि यू हैव दीज नोड्स, ओके, एंड इनके बीच में रिलेशनशिप्स या एजेस होते हैं, ठीक है? तो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज कि आपको समहाउ इस पूरे What does unblock origin does, bro? What is unblock origin? Are you saying some tutorial name or like suggesting some resources? ग्राफ को, राइट, फॉर एग्जांपल दिस इज द ग्राफ, इसको रिप्रेजेंट करना है इन कोड, राइट? तो इस पूरे कंपोनेंट में आपको क्या चीजें दिख रही हैं? एक तो ये जो सारे नोड्स हैं हमारे, राइट? दूसरा ये एज, करेक्ट? तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन दो चीजों को हमें समझ के आगे बढ़ना होगा। तो इस ग्राफ को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर हम बोले तो लेट्स से कि मोस्टली आपको जो प्रॉब्लम दिया जाएगा, इनफैक्ट इंटरव्यूज में भी, उसमें इन ग्राफ्स को लेबल किया जाएगा लाइक 0 1 2 3 4, ठीक है? अभी मैं सिंपल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, बाद में आपको ये ग्राफ्स खुद आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम्स में और बिल्ड भी करना है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो चीज होता है कि इस डेटा स्ट्रक्चर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो दो तरीकों से। पहला होता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल वे है, ओके? इसमें हम क्या करते हैं कि आपको पता है कि आपके पास अगर n नंबर ऑफ नोड्स हैं, राइट, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स ले लोगे, राइट? तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब मुझे जेएस में मैट्रिक्स बनाना आना चाहिए, राइट? तो हम देखेंगे अब, फॉर एग्जाम्पल ये n अगर आपका 4 है, राइट, तो इट मीन्स लेट्स से आप यही एग्जांपल ले लो, राइट, जो कि बेटर होगा। तो लेट्स से हमारा n 0 1 2 3 4, राइट? तो देयर आर 5 नोड्स लेबल्ड फ्रॉम 0 to 4, ओके? तो इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? एक 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स में, ओके? एंड ये मैट्रिक्स हमारा कैसा होगा? ओके, तो लेट्स चेक दिस आउट। तो 2 3 4 एंड ये हो गया हमारा 5, ठीक है? तो 5 रोज आ गई और 5 कॉलम्स भी हमें
बनाना पड़ेगा। ओके, इसको आप नंबर दे दो 0 1 2 3 4, यहाँ भी 0 1 2 3 4, राइट। अब इस मैट्रिक्स में आपको वहां पे वैल्यूज भरने हैं जहां पे दो नोड्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, राइट। तो यहीं पे मैं एक चीज इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा कॉन्सेप्ट, ये जो हमारा ग्राफ है वो है अनडिरेक्टेड ग्राफ। ओके, तो दिस इज अ अनडिरेक्टेड ग्राफ। इसका क्या मतलब होता है कि जो एजेस है ना उसके बीच में कोई भी डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। अगर ये एज, ये हो गया हमारा अनडिरेक्टेड और ये हो गया हमारा डायरेक्टेड, इसका मतलब एक डायरेक्शन में वो एज इज शोइंग अ रिलेशनशिप, राइट। तो अगर आपका अनडिरेक्टेड एज है, इट मीन्स कि आप 0 से 1 भी आ सकते हो और 1 से 0 भी जा सकते हो, राइट। दिस इज अ वे टू रिमेंबर थिंग्स। अब यहाँ पे अगर आपका 0 से 1 में आप इस ग्राफ को देख सकते हो, 0 to 1 में एक एज है, राइट। तो आप यहाँ पे जाओगे 0 और 1 वाले सेल में, राइट, 0th रो एंड द 1th कॉलम, उसके बीच में आप एक नंबर भर दो, कुछ भी भर सकते हो। के लिए आपको बस एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए, 1 भरो, 2 भरो, कुछ भी भरो, आपको वो कोड में समझ में आना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी उसमें 1 भर देता हूँ। अब मेरा ये काम है इसमें कि अब मेरे को पता है कि मैं 0 to 1 एक एज है, सेम चीज मैं 1 to 0 के लिए भी बोल सकता हूँ कि 1 से 0 के बीच में भी एक एज है, क्योंकि ये एक अनडिरेक्टेड एज है, राइट। तो मैं 1 और 0 के बीच में भी सेम वैल्यू भरूंगा। तो ये हो गया मेरे एक एज का रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो आप ये सोच सकते हो कि हर एक एज क्या है, दो नोड से कनेक्टेड है, राइट, एंड A to B एंड B to A, राइट। ये दो एंट्री सेल में भरे जाएंगे। तो अब मैं देखता हूं ये वाले एज का, राइट, 0 to 2, करेक्ट। तो 0 to 2 के लिए इट्स सिंपल, राइट, 0 2 में आप एक एंट्री भर दो और 2 0 में भी आप एक एंट्री भर दो। तो ये हो गया हमारा। अब जल्दी से सारे एजेस का हम भर देते हैं। 1 to 3 के बीच में भी हमें भरना है 1, और सिमिलरली 3 to 1 में भी हमें भरना होगा, राइट, 1। अब 1 to 4, 1 to 4 एंड 4 to 1, तो 4 to 1, करेक्ट। अब 2 to 4, 2 to 4 एंड 4 to 2। तो ये चीज आपको प्रोग्रामेटिकली जावास्क्रिप्ट में करना होगा। अगर या आपको ये इनपुट दिया भी जा सकता है, इट रियली डिपेंड्स आपका इनपुट कैसे दिया गया है एंड डू यू रियली वांट टू रिप्रेजेंट इट इन द मैट्रिक्स, वो बात की बात है, बट इसे हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक तरह का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब सिमिलरली अब आप ये समझो कि एक दूसरा वे ये होता है कि हम एडजेसेंसी लिस्ट यूज करें, ओके। Everyone's talking about the crisis in education, but the real questions remain. How did we get here? कुछ नहीं, इसी चीज को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाना, ठीक है। तो मैं इस ग्राफ को जल्दी से यहाँ भी बना लेता हूँ, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और ये 2 और 4 में कनेक्शन है, 0 1 2 3 एंड 4। अब देखो, एडजेंसी लिस्ट का ये मतलब होता है कि मैं एक मैप स्टोर करूंगा, ओके। मैंने एक मैप ले लिया, ओके। इसमें हमारा 0 1 2 3 4 आर द कीज, ओके। और हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एरे स्टोर करेंगे विच विल टेल कि 0 से कौन कौन से नोड्स कनेक्टेड है, राइट। दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ग्राफ्स। तो 0 कनेक्टेड है मेरा 1 एंड 2 से। अब देखते हैं 1 मेरा कनेक्टेड है 0 3 एंड 4, राइट, 0 3 एंड 4। फिर 2 किससे कनेक्टेड है, सिर्फ 0 से एंड 4 से, ओके। फिर 3 मेरा किससे कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है 1 से, ओके। एंड लास्ट एंट्री विल बी ऑफ 4 जो कि कनेक्टेड है 1 एंड 2 से, ओके। तो ये हो गया मेरा एक अनदर काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन जिसको हम बोलते हैं एडजेसेंसी लिस्ट। अब देखो, इन दोनों को कब कब हमें यूज करना है, राइट। ये पहला बात तो ऑप्टिमाइजेशन हमें समझना पड़ेगा। एडजेसेंसी लिस्ट में तुम देख रहे हो कि ये सारे सेल्स जो है ना, ये सारे हमारे वेस्ट हो रहे हैं, करेक्ट। तो अगर आप देख रहे हो कि अगर मेरा ग्राफ ना ज्यादा डेंस नहीं है, इसका मतलब नोड्स के बीच में जितने पॉसिबल एजेस हो सकते हैं ना, सबको तुम बना दोगे ना, तब जाके ये पूरा मैट्रिक्स मेरा भरेगा एंड देन वी विल कॉल इट एज अ एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द मेमोरी स्पेस, राइट। जब भी आप इस ग्राफ को इनिशियलाइज करोगे, अगर वो 5 नोड है और 5 नोड में बस 2 नोड के बीच में कनेक्शन है, तो बस 2 एंट्रीज भरेंगे इस मैट्रिक्स में, राइट, एंड बाकी सारे will remain unutilized। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस केस में एडजेंसी लिस्ट विल बी दी बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट। क्यों? क्योंकि इसमें यू स्टोर एग्जैक्टली वट एवर इज नीडेड, राइट। एक नोड के कॉरस्पॉन्डिंग अगर कोई भी नेबर नोड कनेक्टेड नहीं है, राइट, देन वो एम्प्टी होगा, राइट। अगर वो नोड बिल्कुल ही आइसोलेटेड है, अकेला है, तो वो एक एम्प्टी एरे से हम रिप्रेजेंट कर देंगे, राइट। तो हम ऐसे मैट्रिक्स में वो स्पेस नहीं वेस्ट करते हैं।
मैट्रिक्स में स्पेस वेस्ट करते हैं, एडजेंसी लिस्ट में वो स्पेस नहीं वेस्ट होती है, वो एक एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। बट दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। एडजेंसी लिस्ट में आप एजेस को कांस्टेंट टाइम में एक्सेस कर सकते हो। लाइक अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या 0 और 4 कनेक्टेड है, राइट, आई मीन एज है या नहीं, लेट्स नॉट यूज कनेक्टेड वर्ड, 0 और 4 के बीच में एज है या नहीं है, राइट, ये क्वेश्चन अगर मैं आपको पूछूं और अगर आप मैट्रिक्स में स्टोर करके रखे हो तो आप डायरेक्ट उस एरे का उस सेल को एक्सेस कर पाओगे, राइट। डायरेक्ट आप ये वाले सेल को एड्रेस करके 0,4 O ऑफ 1 एक्सेस, कांस्टेंट टाइम एक्सेस में आप वो बता पाओगे कि यस और नो, राइट, करेक्ट। लेकिन अगर मैं यही सवाल आपके इसमें पूछ दूं, अगर आपने ऐसी लिस्ट बना के रखी है, देन इट विल बी कि मैं 0 नोड को यहां से पहले मैप से तो मैं पता कर लूंगा, राइट, उसके पूरे एरे को मुझे ट्रैवर्स करना पड़ेगा चेक करने के लिए कि उस एरे में 4 है या नहीं, तो इट वुड बी नॉट एज एफिशिएंट, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडजेंसी मैट्रिक्स में आप एज का कांस्टेंट टाइम एक्सेस पाते हो, नॉट इन एडजेंसी लिस्ट, ठीक है। तो दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स। अब हम इसको जल्दी से जल्दी बनाना भी सीखेंगे, कोड करना भी सीखेंगे, तो लेट्स गो इनटू दैट। तो सिमिलरली आप डायरेक्टेड ग्राफ को भी आप इसको ऐसे ही समझ सकते हो। तो डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है कि आपको एक एज है जो कि एक डायरेक्शन में फ्लो करी है, इसका मतलब 0 and 1, सिमिलरली 0 and 2। इट डजंट मीन कि 2 और 0 के बीच में एक डायरेक्टेड एज है, बट 0 to 2 के बीच में, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे तो बस मैट्रिक्स में 0,2 के एंट्री में आप ट्रू या 1 भरोगे, ओके। 2 और 0 के एंट्री में नहीं, बिकॉज ये वाली एज इसमें नहीं है, ठीक है, ये बस ये वाली एज है। तो अगर आपके ग्राफ में सिर्फ डायरेक्टेड एजेस हैं तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। तो अभी हम प्रॉब्लम जो करेंगे उसमें आपको और अच्छे समझ में आएगा कि ऐसा कोई ये सिमिलर ही चीज़ है, राइट। बट आप एक अनडायरेक्टेड ग्राफ को ऐसा सोच सकते हो कि इट इज़ नथिंग बट जिसके बीच में 0 और 1 के बीच में एक एज है और 1 to 0 के भी बीच में एक एज है, इन दोनों को बस सम कर दो तो एक अनडायरेक्टेड ग्राफ बन जाता है। तो यही है, डायरेक्टेड ग्राफ में एक डायरेक्शन दिया रहेगा आपको और उसी को आप अब ध्यान से देखो। यहाँ पे मैं आपको क्या एक एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ कि आपको इस इनपुट से, एक इनपुट में आपको एजेस दिए हुए हैं। एजेस एक एरे है जिसमें हर एक एलिमेंट एक एरे है विथ द 2 आइटम्स। पहला है मेरा पहला नोड और दूसरा नोड, एंड दिस डिनोट्स कि इन दोनों के बीच में एज है, फिर इन दोनों के बीच में एज है, एंड इन दोनों के बीच में एज है, ओके। एंड आई गेट द टोटल नंबर ऑफ नोड्स। इसको देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि हमारा जो 2D मैट्रिक्स में 5 क्रॉस 5 का होगा, क्यों? क्योंकि मुझे नंबर ऑफ नोड्स इसने बता दिए हैं। तो आई नो कि दिस इज गोना बी अ 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स, और हमें कुछ ऐसा चीज बनाना है, ठीक है, जिसमें कि आप देख सकते हो ये एक 2D मैट्रिक्स है। और जावास्क्रिप्ट में 2D मैट्रिक्स बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप एक पहले 1D एरे बनाओ। ये जो आपको पहला ब्रैकेट और लास्ट क्लोजिंग ब्रैकेट दिख रहा है, ये एक 1D एरे ही हुआ, राइट, जो कि हम जावास्क्रिप्ट में ऐसे डिनोट करते हैं, करेक्ट। अब इसके बीच में क्या है कि हमने हर एक एलिमेंट में एक और एरे भर दिया है, करेक्ट, विथ उतने ही नंबर ऑफ आइटम जितने नंबर ऑफ नोड्स है, करेक्ट। तो ये एक तरीका है कि क्योंकि 2D मैट्रिक्स इज ऑल्सो या फिर 2D एरे इज अ एरे ऑफ एरेज, ठीक है। तो ये एरे है एंड इन विच ईच एलिमेंट इज एन एरे। तो आप देख सकते हो 5 एरेज मैंने इसमें डाले हैं ऑफ लेंथ 5, 1 2 3 4 5। इनिशियली कुछ भी आप वैल्यूज भरो, नॉर्मली जो नल और अनडिफाइंड जेएस में अलग अलग 2 वैल्यूज होते हैं, राइट। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी नहीं असाइन करोगे तो अनडिफाइंड असाइन होगा। ये मैंने बस एक रिप्रेजेंटेशन के लिए नल यूज किया है। तो लेट्स सी, वो हम अभी देखते हैं। तो हमें कुछ ऐसा फंक्शन लिखना है, ओके, जो कि मैं ये कॉल करूँ और यहाँ से एक मैट्रिक्स रिटर्न हो जाए। तो लेट्स राइट दिस फंक्शन। तो हम ये फंक्शन इंप्लीमेंट करने गए हैं। पहला आर्गुमेंट ऐसा जैसा हम देख सकते हैं एक एजेस एरे होगा, ओके, दिस वन, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, और नंबर ऑफ नोड्स होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ नोड्स ले लिया और मुझे पता है कि इस फंक्शन से तो मुझे एक मैट्रिक्स रिटर्न करना है, करेक्ट, यानी कि 2D मैट्रिक्स रिटर्न करना है। स्टेप बाय स्टेप अगर देखो तो मैंने बताया कि एक मैट्रिक्स भी क्या होता है, एक सिंगल 1D एरे ही होता है जिसके हर एक एलिमेंट में भी एक एरे है, करेक्ट। तो हम जाएंगे और इस मैट्रिक्स को It's just like a very cool way to prototype extremely quickly. If I go here in Figma, I just have this design here. बेसिकली ये क्या है, ये मैट्रिक्स भी तो पहले हमें बनाना पड़ेगा 5 साइज का, राइट। तो ये तो बस एक एम्प्टी एरे है, तो हमें 5 साइज का एरे बनाना है। तो एक सिंगल एरे बना लो ऑफ नंबर ऑफ लेंथ ऑफ नंबर ऑफ नोड्स। तो ये मेरा 1D एरे बन गया। अब मैं जाऊंगा इस 1D एरे के हर एक एलिमेंट को इटरेट करूंगा, ठीक है, मैट्रिक्स डॉट लेंथ, ओके, आई प्लस प्लस। अब हमें क्या करना है कि इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में क्या होगा, एक नया एरे होगा, राइट। तो दिस इज इट। तो एक नया एरे बनाओ और जैसा हमें पता है कि इसमें भी उतने ही एंट्रीज होंगे जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं। तो ये मेरा ऑलमोस्ट तैयार है और हम इसे
प्रिंट भी कर लेंगे, राइट, console.log मैट्रिक्स, सिंपल, राइट, लेट्स रन इट। तो अगर आप देखोगे तो बिल्कुल वही चीज़ तैयार हो गई है, वैसा कि मैंने बोला नल वैल्यूज नहीं रहेंगे, इनिशियली 5 एम्प्टी आइटम्स हैं, सारे में अभी कुछ भी नहीं है। और अगर आप इसको एक्सेस भी करोगे तो लेट्स सी इट कि अगर मैं इसका फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करूंगा तो इट विल बी व्हाट, इट विल एक्सेस दिस एलिमेंट, राइट। तो लेट्स रन इट। जैसा कि देख रहे हो अनडिफाइंड प्रिंट होती है, नल नहीं प्रिंट होती है। तो बाय डिफॉल्ट जेएस अनडिफाइंड असाइन कर देता है उन मेमोरी स्पेसेस में जिसमें आपने कुछ भी नहीं भरा हो, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो मेरा मैट्रिक्स एटलीस्ट तैयार हो गया। अब मुझे इस मैट्रिक्स में बेस्ड ऑन दिस एजेस मुझे 1 या 0 भरना है, विच विल टेल कि इन दो एजेस नोड्स के बीच में एक्चुअली में एज प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो उस पूरे एजेस को ना इटरेट कर लेते हैं। तो ये एक फॉर ऑफ लूप है जो कि जिसमें कि आप बिना इंडेक्स के भी इटरेट कर सकते हो हर एक आइटम, ठीक है। तो मुझे पता है कि ये एज क्या है, ये एज ये एक एलिमेंट है जो कि एक एरे ही है, राइट, जिसका फर्स्ट एलिमेंट एक नोड है। तो मैं उसको पहला नोड को बोल देता हूँ सोर्स, राइट। तो लेट्स कॉल दिस सोर्स एंड लेट्स कॉल इट डेस्टिनेशन एज ऑफ 1, ठीक है। मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट एरे में तो 2 ही नोड्स आएंगे, राइट, ये गिवन है मेरा इनपुट में। अब जैसे मेरा ये एक दोनों नोड मुझे पता चल गया, तो मुझे पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग उस मैट्रिक्स में मुझे ये एंट्री में ट्रू या फॉल्स भरना है। तो मैं चलो आपको ट्रू भर के दिखाता हूँ, राइट, 1 या ले लो या ट्रू ले लो, जो भी है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये एक अनडिरेक्टेड ग्राफ है। तो मैं क्या कर रहा था उस टाइम, 0 और 1 अगर है तो पहली चीज तो ये है कि 0 और 1 के बीच में ही एज इसने बता के रखा है, तो आप खुद से वो रिवर्स एज नहीं डालोगे, राइट। तो कंसीडर कि एक डायरेक्टेड ग्राफ है, सिर्फ 0 और 1 के बीच में एज है, ओके। तो ये एक तरीका है आपका बनाने का एक ग्राफ, ओके। तो लेट्स नाउ डू दिस console.log मैट्रिक्स। अब हम इसे अगर रन करेंगे तो आप देखोगे कि 0,1, राइट, इस पे ट्रू, राइट, 0,1 पे ट्रू है, 2,3 पे भी ट्रू होना चाहिए। तो 0, 1, 2, राइट, 2,3, राइट। तो ये देखो 3 आइटम्स एम्प्टी हैं, 4th आइटम ट्रू है, बिल्कुल आपका सही रिप्रेजेंटेशन है ये, ओके। तो इससे आपका एक 2D मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग अ ग्राफ तैयार हो गया। सिमिलरली अगर आपको ये अगर ये अनडिरेक्टेड ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता तो आपको एजेस में ही 1,0 एंट्री भी मिलता, जो कि नहीं है, जो कि चलेगा। आपको बिल्कुल जो इनपुट दिया है उसके हिसाब से ग्राफ बनाना है। तो हमारा ये ग्राफ तैयार हो गया है। अब मुझे अगर, तो ये देखो, ये हमने ना डायरेक्टेड ग्राफ ही बना दिया, राइट। तो डायरेक्टेड ग्राफ जैसा कि मैं बात कर रहा था कि रिवर्स एज होना जरूरी नहीं है, आपको एग्जैक्ट बताया रहेगा कि 0 और 1 के बीच में एज है, 1 और 0 के बीच में अगर एज होगा तो यहाँ पे एंट्री रहेगी उसकी, तो इसमें नहीं है। तो अब हम दूसरा तरीका पे जाते हैं, बिल्डिंग एडजेंसी लिस्ट, ठीक है, बिल्ड एडजेंसी लिस्ट। इसमें आप अगेन एजेस ले लो और नंबर ऑफ नोड्स ले लो, कोई चेंज नहीं है इनपुट में, ओके। तो अब हम इस पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले एडजेंसी लिस्ट भी हमें पता है कि इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। सबसे पहली बात है कि मैं चलो इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ये एक ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, और जैसा कि मैंने बोला था कि ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक नोड्स भरने हैं जो कि इसके नेबर्स होंगे, राइट। तो 2 के सारे नेबर्स इसमें जाएंगे, यानी 1 के डायरेक्ट नेबर्स इसमें जाएंगे, 2 के डायरेक्ट नेबर्स इस एरे में जाएंगे, राइट। तो नेबर क्या हुआ, जिसमें डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर 1 का जिस नोड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है एज के थ्रू, उसको हम 1 का नेबर बोलते हैं, राइट। तो ये एक एजेंसी लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इसको हम कैसे बिल्ड करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें पता है कि यहाँ पे हम एक मैप रिटर्न करेंगे। आप एक इसको मैप ही बोल लो या फिर चलो एजेंसी लिस्ट ही बोल दो, राइट। तो ये मेरा एजेंसी लिस्ट इनिशियली जो है एम्प्टी है, करेक्ट। अब मैं इस पे जाके इस पर्टिकुलर लिस्ट को भरूंगा आफ्टर इटरेटिंग थ्रू ऑल द एजेस, क्योंकि एजेस में ही तो मेरा असली इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, वहां से मैं इन्फॉर्मेशन निकालूंगा एंड उस इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके इस लिस्ट में मुझे स्टोर करना है। तो अगेन सेम चीज़ देखो, मैं यहाँ से उठाता हूँ, सोर्स और डेस्टिनेशन का तो इन्फॉर्मेशन सेम ही है, राइट। तो ये मेरा आ गया सोर्स और डेस्टिनेशन। एडजेंसी लिस्ट में हमें ये पता है कि अगर वो एज प्रेजेंट है तो इसका ये मतलब है कि सोर्स का नेबर ये है, करेक्ट, डेस्ट। तो अब क्या मुझे करना है कि एडजेंसी लिस्ट ऑफ, ठीक है, ये मुझे इसमें ये एंट्री बनानी है, करेक्ट। ये वाली एंट्री बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसा ऑपरेशन करना पड़ेगा, राइट। सोर्स इज इक्वल टू, मुझे पता है कि एक एरे होने वाला है जिसमें मेरा एक डेस्टिनेशन नाम से एक नोड स्टोर हो जाएगा, ठीक है। बट हमें पता है कि आगे एक और एंट्री आ सकती है, लाइक पहले तो चलो 0,1 आया, फिर क्या आएगा 0,2। तो क्या मतलब है, 0 का 1 भी एक नेबर है, 0 का 2 भी एक नेबर है, करेक्ट। तो हमें ये वाली चीज़
भी स्टोर करनी है कि दूसरा डेस्टिनेशन भी इसमें स्टोर होना चाहिए उस पर। तो पहला ऑपरेशन, अगर ये एंट्री है ही नहीं जीरो वाली, तब तो हम उसे क्रिएट करके एक एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम वो वही लॉजिक अभी लिखेंगे। तो इफ दिस एग्जिस्ट, ठीक है, यानी कि वो एंट्री है, वो पर्टिकुलर सोर्स की एंट्री है उस ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे कि आपका नॉन एग्जिस्टेंट है या नहीं चीज़ ये चेक हो जाती है। या फिर आप एक और तरीके से चेक कर सकते हो, इफ सोर्स इन एडजेसेंसी लिस्ट, तो ये आपका ये बताता है कि इस नाम का की प्रेजेंट है या नहीं इस मैप में, ठीक है। तो अभी मुझे दिख रहा है कि जीरो प्रेजेंट नहीं है, तो मुझे क्या करना होगा, इसमें एक एंट्री बनानी पड़ेगी, ठीक है। और पता है कि 0,1 जो वैल्यू आ रहा है मुझे स्टोर करना होगा, तो भाई ये स्टोर कर दो, ओके। अगर अगर ये ओके वेट, तो चलो ये एक तरीका हो गया कि अगर ये है तो तुम्हें कुछ करना, अगर अगर ये नहीं है प्रेजेंट राइट एजेंसी लिस्ट में, तो हमें क्या करना होगा, तो हमें एक्चुअली में एक एरे बना के उसको इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो ये देखो मैंने इंसर्ट कर दिया। अगर वो की ऑलरेडी प्रेजेंट है तो जाहिर सी बात है कि हमें बस उसके अंदर एक पुश करना है, राइट। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू का एक पर्टिकुलर एरे होगा जिसके अंदर मुझे पुश करना होगा DEST को। तो ध्यान से देखो हम क्या कर रहे हैं, अगर ये की प्रेजेंट है तो मुझे पता है कि इसके अंदर एक एरे होगा ही, तो मुझे कुछ नहीं, 0, इसके अंदर मुझे बस 1 इंसर्ट कर देना, और आगे मान लो 2 आया तो उसमें बस पुश करना है। तो पुश इज नथिंग बट अपेंडिंग दिस एरे, इसके अंदर एक और इनपुट जाके भर दिया। बट अगर वो है ही नहीं, राइट, तो हमें 0 और एक एम्प्टी एरे क्रिएट करना होगा और उसमें एक पहला वैल्यू डालना पड़ेगा, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ ये वाले एल्स कंडीशन में। तो ये मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और ये बिल्कुल हमें जेनरिक वे में हर ऑब्वियसली सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए लॉजिक चलेगी। एंड एट द एंड ऑफ दिस आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो हमें कुछ वैल्यूज देखने को ढंग से मिलनी चाहिए। तो इस फंक्शन को लेट्स कॉल इट, और यही वाली हम इनपुट यूज़ करेंगे जो हम इतने देर से यूज़ कर रहे हैं, और इसको भरो और 5, ठीक है। इसको हटा देते हैं, सिंटैक्स एरर आएगा फालतू में, तो इसको भी कॉल नहीं करना है। लेट्स रन इट, क्लियर, रन, ओके। तो आप देख सकते हो कि ये एक मैप है जिसमें 0 का नेबर हो गया 1 एंड 4, ओके। एंड ओके, सो अगर आप देख रहे हो ये कितना सही रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें इनपुट में ना 1 का कोई भी नेबर नहीं है, राइट। आई मीन 1 का 0 और 1 में एक डायरेक्टेड एज है, बट 1 से कहीं भी कोई एज जाती नहीं है, राइट, डायरेक्टेड एज नहीं जाती है। तो दिस इज ऑल अ डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो इसलिए 1 की कोई एंट्री नहीं है, या फिर आप इसको एज्यूम कर सकते हो कि 1 का बस एक एम्प्टी एरे है। तो उसको भी अगर आपको वो लॉजिक रखना है तो आप रख सकते हो, बट ये दिस इज लाइक मोर एफिशिएंट। मैं उस मैप में उस वो की ही नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, राइट। तो ये हो गया मेरा पूरा एक प्रॉपर डायरेक्टेड ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन यूजिंग बोथ एडजेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेंसी लिस्ट, ओके। ठीक है, तो थैंक यू। ये हमारा पहला लेसन था। तो इस पूरे सीरीज़ को हमें कंप्लीट करना है, मेरे पास पूरा एक रोड मैप है जो जो हमें प्रॉब्लम्स इसमें सॉल्व करना है। तो आप जेएस में पूरा ग्राफ्स को मास्टर कर लोगे, डोंट वरी, बट प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, इससे मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। लाइक एंड सपोर्ट द चैनल, एंड डू कमेंट इफ़ यू नीड कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक भी मुझे अगर इंक्लूड करना है, ताकि मैं कुछ भी मिस ना करूँ। सो थैंक यू, सी यू ऑन दी सेकेंड वीडियो, ओके। Hello, this is Questionable Coding with Vladimir, and today we're going to talk about an extremely important topic called graph. Graph is a data structure that is almost always used during technical interviews, and it's widely used in production code for different algorithms. So we'll start with general description. We'll cover different types of graphs, common problems, how we can implement a few of the methods in JavaScript, and many more. So let's start. So what's a graph? Graph consists of nodes or vertices connected by edges. It's a very simple concept, but it describes a lot of what's going on in the real world. The most famous example is a social graph, where we have a connection between people. And on the picture you see 5 blue nodes, each representing a person, and some people are connected with others. Don't know who needs to hear this, but
ओके तो ये जो हमारा सेकंड वीडियो है, आई होप आपने पहला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात किया है। बट सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये भी होना चाहिए कि हम ये ग्राफ की पूरी कॉन्सेप्ट्स पढ़ क्यों रहे हैं, राइट, एंड उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं, और इसको ढंग से एक बार समझना ज़रूरी है। और काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो हम इसको रखेंगे। तो इसमें मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा कि हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे इस प्लेलिस्ट में, जो भी हम ग्राफ्स के प्रॉब्लम बनाएंगे, व्हाट डज़ इट रियली मीन, कि हम उस ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं, ग्राफ डेटाबेस की नहीं, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्राफ डेटाबेस एंड ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, जो कि मैं इन मेमोरी में हमेशा बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है, लेट्स डिनोट इट। तो अगर तुम्हारा इन मेमोरी ग्राफ की बात हो रही है तो इट मीन्स कि आप कोई प्रोग्राम के थ्रू, जावा, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, कोई भी, राइट, उसके थ्रू आप ग्राफ की डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो वाइल द प्रोग्राम रन्स। ओके, तो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग इन दिस प्लेलिस्ट। जो भी आप क्वेश्चन करते हो LeetCode में, जहाँ भी वो कोड रन होता है, वहाँ पे एक ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, जैसा हमने अभी किया, राइट। हमने एक ग्राफ बिल्ड किया, बट जैसे वो प्रोग्राम खत्म होता है देन इट गोज आउट, राइट। तो वो कहीं भी मेमोरी में परसिस्टेंट नहीं है, करेक्ट। तो दैट इज़ इन मेमोरी ग्राफ। जब तक हमारा प्रोग्राम चल रहा है, द ग्राफ विल स्टे इन द मेमोरी। अब उस इन मेमोरी ग्राफ पे हम बहुत सारे एल्गोरिदम्स रन कर सकते हैं, राइट। और वो क्या एल्गोरिदम्स है, एक स्नीक पिक में आपको देता हूँ, लाइक शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, राइट, एक पर्टिकुलर नोड से दूसरे नोड का। ओके, एक ग्राफ एल्गोरिदम है, डिस्चार्ज एल्गोरिदम हो गया, टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो गया, ये आप इन मेमोरी ग्राफ पे कर सकते हो, राइट। तो ये तो हो गया मेरा इन मेमोरी ग्राफ। ये तब काम आएगा, राइट, यूजुअली हमारे पास 100 नोड्स भी हैं तो चलेगा, 1000 नोड्स हैं तो भी चलेगा, राइट, वो उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूँ कि आपको बिलियन नोड्स के साथ, लेट्स से कि एक रियल लाइफ आप यूज़ केस ले लो, लाइक लिंक्डइन या फेसबुक की यूज़र्स को आप ले लो, राइट। तो ये यूज़र्स को स्टोर करके रखना, अगर आप पूरा का पूरा डेटा इन मेमोरी तो आप नहीं रखोगे, राइट, या आप एक शॉर्ट टाइम के लिए तो नहीं रखोगे, उसको आपको एक परसिस्टेंट कहीं भी डिस्क में रखना पड़ेगा, एंड इट विल नीड अ प्रॉपर स्टोरेज, ताकि कल को अगर मेरे को ये पता करना है कि मेरा कोई फ्रेंड है, वो मेरे से कितना कनेक्शंस दूर है, राइट, ये सारी चीज़ें मैं कैसे करूँगा, ये तो मैं डेटाबेस को क्वेरी करूँगा थ्रू अ सर्विस, और वो सर्विस मुझे रिटर्न करेगी। तो इसके लिए यूज़ होता है ग्राफ डेटाबेस। कुछ नहीं, इट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं, लाइक Neo4j, आई थिंक अमेजोन का भी कुछ सर्विसेज हैं जो कि आपको ग्राफ डेटाबेस बनाने में हेल्प करते हैं, राइट, एंड दोज आर फॉर परसिस्टेंट डेटा, ठीक है। तो आपकी ये जो भी ग्राफ बन रही है, ये इन मेमोरी नहीं है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्राफ डेटाबेस की, ओके। तो ये हो गया हमारा एक प्रॉपर परसिस्टेंट स्टोरेज, राइट, ये कोई इन मेमोरी डेटा नहीं है। तो ये बहुत सारे डेटा, बहुत लार्ज ग्राफ अगर आपको स्टोर करके रखना है फॉर फ्यूचर यूज़ केसेस, तो ऑब्वियसली हमको डेटाबेस में ही रखना पड़ेगा, राइट। एंड डेटाबेस में वी कैन डू अ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, उसके लिए बहुत सारी सर्विसेज आती हैं, राइट। तो आई होप यू गेट द डिफरेंस। अगर इन मिलियन फ्रेंड्स में से मैं अगर ये पता करना चाहता हूँ, या एक छोटा सा कॉम्पोनेंट में कोई ऑपरेशन करना चाहता हूँ, तो मैं उस डेटा को फेच करके डेटाबेस से लाऊंगा और इन मेमोरी वो ऑपरेशन करूँगा, ठीक है, थ्रू एनी ग्राफ एल्गोरिथम। तो ये हो गया, देयर इज़ अ स्मॉल रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल बोल दूं कि गूगल मैप्स में सिटीज़, इतने सारे सिटीज़ हैं होंगे, राइट, लैक्स मिलियंस में सिटीज़ हैं हमारे वर्ल्ड में, वो सारा डेटा बेस में ही स्टोर करके रखना पड़ेगा, राइट, इतना ज़्यादा डेटा है। बट अगर मैं जब भी दो सिटीज़ के बीच में एक रूट निकालने की कोशिश करता हूँ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने की कोशिश करता हूँ, आई क्वेरी द डेटाबेस, वहाँ से मेरे को इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि ओके, ये सिटी पूरा एक प्रॉपर छोटा सा ग्राफ आता है, इट्स नॉट द एंटायर ग्राफ, यू कैन विजुलाइज लाइक दिस। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन कुछ ऐसा होगा, बट आई होप यू गेट द जिस्ट ऑफ इस, कि हम पूरे बिलियन सिटीज़ यहाँ पे नहीं ला सकते हैं, करेक्ट, अपने मेमोरी में। तो हम एक छोटा सा कंपोनेंट ला के उस पर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम रन कर सकते हैं, जो कि एक इन मेमोरी कैलकुलेशन होगी। तो आई होप दिस इज़ दी थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इन मेमोरी ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर और ग्राफ डेटाबेसेस। तो हमारा पूरा का पूरा स्कोप जो है प्लेलिस्ट का, वो इन मेमोरी ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर पे है, राइट। हम कोई भी ग्राफ डेटाबेस बनाना नहीं सीख रहे हैं इसमें। हमें कोई भी प्रॉब्लम दी जाएगी, हम उसको एट अ टाइम इन मेमोरी पे रन करेंगे, उसके ऊपर ग्राफ एल्गोरिथम चलाएंगे। तो इसकी जो थर्ड वीडियो है, इसके जस्ट बाद, उसमें हमने ग्राफ बनाना तो सीख लिया था पहली वीडियो में, तो हम थर्ड वीडियो में ये सीखेंगे अब कि एक बार ग्राफ बन गया इन मेमोरी, तो उस इन मेमोरी ग्राफ में हम कैसे कोई भी एल्गोरिथम रन कर सकते हैं, राइट। तो दिस विल बी द कोर ऑफ आवर फर्दर टॉपिक्स एंड वीडियोज़। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, हम हमेशा इन मेमोरी ग्राफ पे अब जो भी एल्गो पढ़ेंगे वो रन करना है। तो लेट्स मूव टू द थर्ड वीडियो।
हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ द ग्राफ प्लेलिस्ट। तो ये जो हमारा वीडियो है उसमें हम ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च ट्रावर्सल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ से सारे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप इस प्लेलिस्ट को बहुत ढंग से फॉलो करो। और पूरा का पूरा हम जो कोड करेंगे वो जावास्क्रिप्ट में होगा, अगेन आई टेल यू। तो हमारा जो मोटो इस वीडियो का, उसके बिहाइंड ये नहीं कि भाई ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च को ऐसे रट्टा मार के हम उसको कोड करके निकल लिए, राइट। वाई अ पर्टिकुलर एल्गोरिथम एंड सॉल्यूशन इज यूज्ड, ठीक है। और इसको एक जेनरिक सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, हम उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे इस वीडियो पे, ठीक है। तो आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा एडजेंसी लिस्ट और एडजेंसी मैट्रिक्स के ऊपर, जिसमें हमने ये तो पता कर लिया कि ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करना है, राइट। तो एक बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर लिया, उसके ऊपर हम बहुत सारे एल्गोरिथम्स लगा सकते हैं, और स्टार्टिंग विथ ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। तो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में हमारा जो सबसे पहला प्रॉब्लम दिया जाता है हमें, वो ये है कि तुम्हें किसी भी स्टार्टिंग नोड से, ओके, क्या करना है कि वहां से लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल करना है। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च का दूसरा नाम है लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। ओके, इसका क्या मतलब होता है, क्या पहले लेवल की मीनिंग समझ लो। ये मेरा लेवल 0 हो गया, ओके। बेसिकली जहां से मैं ट्रावर्सल स्टार्ट करूंगा, ओके। उस लेवल से जितने भी लेवल 2 हाईएस्ट। नोड्स 1 एज से कनेक्टेड है, ध्यान से सुनना, उसको हम लेवल 1 कहेंगे, ठीक है, सिंपल। अब उस लेवल के सारे नोड्स से जितने भी नोड्स बाय 1 एज कनेक्टेड हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, लेवल 2। ध्यान से देखो, 5 हमारा लेवल 2 में नहीं आएगा, क्योंकि लेवल 1 से बस ये 4 और 3 कनेक्टेड है बाय 1 एज, राइट। आप 1 से भी 1 एज में आ सकते हो, ठीक है, डजंट मैटर। बट 5 लेवल 1 से 2 एज की दूरी पे है, ठीक है, इट्स नॉट 1 एज। तो ये हो गया हमारा लेवल 2, ओके। अब ये जो 5 वाला नोड है वो लेवल 2 से कितनी दूरी पे है, 1 एज की दूरी पे है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा लेवल 3। तो देखो, मैंने ऐसा एग्जांपल जानबूझ के लिया है ताकि आपको ऐसा माइंड में इमेजिन मत कर देना कि आपको लेवल्स क्लियरली दिखेंगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल की डेफिनेशन ये है कि नेक्स्ट लेवल जो है प्रीवियस लेवल से 1 एज की दूरी पे होना चाहिए, ठीक है। और एक लेवल में मल्टीपल नोड्स हो सकते हैं, एज यू कैन सी, करेक्ट। तो ये हो गया लेवल की डेफिनेशन। अब आप इस पर ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च जब लगाओगे, राइट, तो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च का सिंपल मीनिंग है कि भाई फर्स्ट लेवल कॉरेज 59 MB, डैम भाई, 59 MB का इसका एक्सटेंशन। आई नेवर सॉ समथिंग मोर देन। क्या हो गया, हो गया। यानी कि जो सबसे पहली लेवल है उसके सारे नोड्स को पहले खत्म करो, फिर दूसरे लेवल पे जाओ, उसको भी खत्म करो। खत्म करने का क्या मतलब है कि विजिट करो, ठीक है। इट मीन्स वी आर ट्रैवर्सिंग द ग्राफ इन लेवल ऑर्डर, ठीक है। तो ट्रैवर्सिंग का जो सबसे मेन प्रोसेस होगा वो हम ये करेंगे कि उसको विजिट मार्क करना है सबसे पहले, तो ठीक है। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं। तो दो चीज देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तुम एक लेवल के सारे नोड्स विजिट तो कर लोगे, ठीक है। चलो मैं इसको रेड से डिनोट करता हूं, ओके। तुम एक लेवल के इस नोड को फॉर एग्जांपल तुमने विजिट कर लिया, ठीक है, 0। अब लेवल 2 या लेवल 3 के नोड नेक्स्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है, लेवल 1 ही होना चाहिए, ठीक है। तो लेवल 1 तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, लेवल 0 के जितने भी नेबर्स हैं, राइट, वो सारे लेवल 1 में होंगे, यही तो डेफिनेशन है, राइट। आपको नेबर्स एडजेसेंसी लिस्ट से तो मिल जाएगा, राइट। तो देखो, मैंने राइट हैंड साइड में एडजेसेंसी लिस्ट भी बना के रखी है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप ये ध्यान से देखो, ये एक अनडिरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। तो अनडिरेक्टेड ग्राफ में 0 का नेबर 1 एंड 2 है, एंड 1 का नेबर भी 0 है, ठीक है, एज आप देख सकते हो, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एडजेसेंसी लिस्ट को करेक्टली बनाओ। अनडिरेक्टेड एज के लिए रिवर्स एज, ठीक है, वो रिप्रेजेंट होना चाहिए एडजेसेंसी लिस्ट में, 0 to 1 एंड 1 to 0। अब आगे बढ़ते हैं। इट्स एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू आप नेबर्स पता कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है कि लेवल का इन्फॉर्मेशन तो हम यहाँ से जरूर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें सारे नोड्स के नेबर का पता है। लेवल 2 तक आप कैसे पहुंचेंगे, लेवल 1 के सारे नोड्स से जो नोड्स एक एज से दूरी पे हैं या उनके नेबर्स हैं, उनको हम नेक्स्ट लेवल के नोड्स बोलेंगे। सिंपल, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो काम होगा
वो ये होगा कि एक सबसे पहली बात है ना कि लोग बीएफएस जब पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि डायरेक्टली क्यू यूज कर लो। हमें इंट्यूशन बिल्ड करना है, राइट, कि वो क्यू ही हम क्यों यूज कर रहे हैं, करेक्ट। तो अब ध्यान से देखो, अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं। जब हम लेवल 0 से लेवल 1 तक आ रहे थे ना, तो हम क्या किए कि उस लेवल 0 से उसके सारे नेबर्स को विजिट किए, राइट। हमने 1 को विजिट कर दिया, 2 को विजिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो क्या है, लेवल 1 के ही नोड्स से हमें नेबर्स निकालने हैं, करेक्ट। तो कैन आई से दैट जिस ऑर्डर में तुमने इन नोड्स को विजिट किया, राइट, उसी ऑर्डर में तुम्हें उन विजिटेड नोड्स के भी नेबर्स को अब एक्सप्लोर करना है या विजिट करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सिनोनिमस है फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट से, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, राइट। इसको आप अभी और अच्छे से फील कर पाओगे, राइट। इनफैक्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो ये जो मैंने ये बॉक्सेस बनाया है ना, डजंट सीम लाइक ये क्यू ही है, करेक्ट। छोटा सा लाइक एग्जाम्पल था ये, राइट। बट आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मैं सबसे पहले 1 को एक्सप्लोर करूंगा, देन 2 को करूंगा। ये मेरा ऑर्डर चलते रहना चाहिए, राइट। एंड ऑर्डर इज सीरियल, जैसा कि हमें क्यू में मिलता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। 0 से हमने एंट्री डाली क्यू में 1 और 2 की। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, 1 को एक्सप्लोर करना, ठीक है। फिर प्रोसेस क्या होगा, 2 को एक्सप्लोर करना। क्यों करना, क्योंकि 1 और 2 सेम लेवल में है, सारे लेवल्स को हमें पहले खत्म करना है, करेक्ट। तो यार ये देखो दूसरे तरीके से कि हम क्यू क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्यू क्यों यूज कर रहे हैं, इसके बिहाइंड छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं ताकि आपका इंट्यूशन थोड़ा और क्लियर हो। इस एग्जांपल को ले लो, ठीक है, ये येलो ग्राफ को। अब तुम ये सोचो कि अगर तुम ये क्यू यूज नहीं करोगे, राइट, मान लो कि ये सी और डी नोड्स हैं, ए बी सी डी, राइट। अगर क्यू में Can we actually prove that God exists? सीक्वेंस में ए बी सी डी नहीं आया, राइट, तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो, जब भी तुम इस क्यू से एक एलिमेंट को निकालोगे, राइट, इट मीन्स कि तुम उसके नेक्स्ट लेवल के नेबर्स को, मतलब जो ए के नेबर्स हैं, उसको तुम एक्सप्लोर करोगे या विजिट करोगे, करेक्ट, ओके। सिमिलरली बी का भी वही हाल है, सी का भी यही हाल है, डी का भी यही हाल है। तो ये देखो सीक्वेंस में हमारा ये चलेगा, व्हेन यू विल एनकाउंटर दिस ए बी सी डी इन सीक्वेंस इन सीरीज, राइट, then only your this level, right, will be marked visited properly level wise। सिंपल सा बात है यार, उतना ऐसा कंफ्यूज होने वाली नहीं बात है। तो ये देखो कि ए बी सी डी जो नेबर्स हमें यहाँ पे मिलेंगे, राइट, उसको हमें क्या करते जाना है, क्यू में एंटर करते जाना है। एक नोड मिला, उसको विजिट करो, ठीक है, उसको क्यू में डालो, ओके। और नेक्स्ट टाइम जब हम क्यू से उस नोड को निकालेंगे तो उसके नेबर्स को प्रोसेस करेंगे। चलो, तो अब हमारा क्या काम है, इस बीएफएस के एल्गोरिथम को, इस ग्रीन वाले ग्राफ को रन करना, ठीक है। वो क्यू वाला इंट्यूशन अब तुम लोग फिगर आउट कर लेना ढंग से, बट अभी फिर तुम्हें वो समझ में आने वाला है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या एल्गोरिथम है कि क्यू लो, उसमें हमने 0 से बीएफएस स्टार्ट करना है। तो 0 को क्या करो, विजिट करो। विजिटेड एक एरे हम ट्रैक करेंगे फॉर ट्रैकिंग ऑल द विजिटेड नोड्स, जिसमें कि हमने 0 को रख दिया। अब 0 विजिट हो गया है, तो मैं उसको एक बार ग्राफ पे ऐसे मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोग भी याद रख पाओ, है ना। अब हमारा क्या काम है, ध्यान से देखो, हमारा ये काम है कि उस जो भी नोड अनविजिटेड था और अभी विजिटेड हुआ है, उसको हम क्यू में रख देंगे। क्यों, क्योंकि क्यू में जब हम पिक करेंगे ना, तो उस एलिमेंट से नेक्स्ट लेवल के नोड्स डिस्कवर होंगे और हम उनको विजिट करेंगे, ठीक है। तो हमने 0 को देखा, पॉप किया। 0 के कौन कौन से नेबर्स हैं, 1 और 2, विजिटेड मार्क करो, ठीक है। इस बार विजिटेड में क्या हो गया, 0 1 और 2, ठीक है। यहाँ पे भी फटाफट इसे मार्क कर देते हैं, ओके। नेक्स्ट काम क्या है, जब हम विजिटेड मार्क करते हैं, देन हमारा क्या स्टेप होता है, उसको क्यू में रखने का, जैसे हमने 0 को रखा था। तो 1 और 2 मेरा क्यू में चला गया। अब नेक्स्ट काम क्या है, क्यू में अगेन देखो, और जो पहला एलिमेंट है उसको निकालो। देख रहे हो, सीरियली लेवल ऑर्डर रिवर्सल होगा अभी। अब 1 को हमने निकाला, और 1 के नेबर्स क्या क्या हैं, 3 और 0 हैं। 0 ऑलरेडी विजिटेड है, 3 अनविजिटेड है, राइट। तो उसे हम विजिटेड मार्क करेंगे। देखो, जो भी अनविजिटेड नोड है ना, विजिटेड होता है, उसे हम क्यू में डाल देते हैं, करेक्ट, ठीक है। यहाँ ये बस एक रिप्रेजेंटेशन में यहाँ बना रहा हूँ, जो कि विजिटेड एरे का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब अगेन लुक एट द क्यू, सिंपल, आप क्यू फॉलो करो, चलेगा। अब 2 को आप निकाले, ठीक है। 2 के क्या क्या नेबर्स हैं, 3 ऑलरेडी विजिटेड है, 4 अनविजिटेड है, ठीक है। अनविजिटेड को विजिट करो, है ना, और क्यू में डालो,
सिंपल जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ में उसे ऐसे शो कर दो। ठीक है, अब देख रहे हो क्या हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे अगर तुम लोग देखे होगे तो हमने 0 को पहले ट्रेवर्स किया जो कि लेवल 0 है, 1 और 2 लेवल 1 के दोनों देखो ट्रेवर्स हुए हैं। अब बारी है 3 की, जो कि तुम देखोगे, देख रहे हो क्यू में 3 और 4 है। यही फायदा है क्यू का यूज करने का। तो अब हम क्या करेंगे, क्यू पे पिक करेंगे, 3 निकला, 3 का कोई भी नोड अनविजिटेड नहीं है नेबर में, है ना, तो रहने दो, राइट। 4 का नोड कुछ भी नहीं हुआ बेसिकली यहाँ पे, तो अब हमें वापस पिक किया, 4 को निकाला, 4 से 5 है ना, अनविजिटेड है, 5 को हमने विजिट किया। ठीक है, विजिट जब भी होता है कोई भी चीज़ तो क्या होता है, उसे क्यू में रखना पड़ता है, क्यू में रख दो। ओके, ये हो गया विजिट। अब वापस हम सेम चीज़ करेंगे, राइट। अब हम जाएंगे और क्यू में वापस देखेंगे, 5 को पॉप किया, कुछ भी नहीं है। जिस मोमेंट पे क्यू खाली हो चुका है, दैट इज द मोमेंट व्हेन योर बीएफएस एंड्स। तो देख रहे हो, ये बिल्कुल एक हम लेवल बाय लेवल में ही हम नोड्स को विजिट किए हैं उसी ऑर्डर में, जस्ट बिकॉज वी यूज द क्यू। ओके, अब हम इसको जाके कोड में ट्रांसफॉर्म करेंगे, बेसिकली जो भी हमने किया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, बीएफएस का सूडो कोड लिखेंगे, जो भी हमने अभी तक किया है उसी को कोड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमने शुरू में क्या कर लिया, एक एम्प्टी क्यू ले लिया। अब स्टार्टिंग नोड हमें पता है, स्टार्टिंग नोड के विजिट, बेसिकली स्टार्ट नोड को हमने विजिट कर लिया, विजिटेड एरे में भी वो मैप में चली गई। अब उस क्यू में हमें उसे पुश कर देना है। ठीक है, ओके, अभी के लिए ये है। अब बिल्कुल तब तक हमें कुछ स्टेप्स लेने हैं जब तक क्यू खाली नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, हमारा क्या काम है, क्यू से एक एलिमेंट को निकालना, राइट। क्यू डॉट शिफ्ट, दिस विल गिव यू द फर्स्ट एलिमेंट। मे बी मैं ये एपीआई ना यूज करूं, बट अभी के लिए देख लो। ठीक है, क्यू डॉट शिफ्ट ये करेंगे, देन वी विल गेट द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो मान लो कि इसको हम करंट बोल दिए, है ना, करंट एलिमेंट इन द क्यू। ऑलराइट, अब हमने क्या करना है कि इस पर्टिकुलर करंट नोड के सारे नेबर्स को विजिट मार्क करना है, तभी करना है जब वो ऑलरेडी विजिटेड नहीं है ना। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर ईच नेबर, ओके, ऑफ करंट, ओके, current, what we will do if it is unvisited, है ना। Always remember, the money you put in stocks is for your future. Don't touch it. If not visited of neighbor, ठीक है, जो भी नेबर्स अनविजिटेड होंगे, राइट, उन्हीं के लिए हम बेसिकली उन्हीं नोड्स को हमें विजिट करना है। ठीक है, नेबर है ये। उसके बाद क्या करना है, क्यू में पुश कर देना है। ठीक है, ये तो कर रहे थे ना, विजिटेड मैप में उसको विजिटेड मार्क कर रहे थे और क्यू में पुश कर रहे थे, तो क्यू डॉट पुश, ओके, और यहाँ पे हमारा नेबर। ओके, देखो मोस्टली हमारा ये बीएफएस का एल्गोरिदम है। ओके, और ये काम हमें तब तक करना है लूप में जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता है, जब तक क्यू में एलिमेंट्स हैं। ओके, यहाँ तक भी बेसिकली ये पूरा स्टेप हमें करते रहना है जब तक क्यू खाली नहीं हो जाता है। ओके, तो जैसे ही हम वो वाइल लूप लगा सकते हैं जब रियल कोड करेंगे तो, बट यही है, राइट। अब ध्यान से देखो एक केस छोटा सा, राइट, आई थिंक मोस्टली तुम्हारा इससे कवर तो हो जाएगा, बट एक दिक्कत आ जाएगी। एक सेकंड रुक जाओ। अब बोलो भाई इसमें ना तुम्हारा ग्राफ ऑब्वियसली कनेक्टेड होना चाहिए, करेक्ट। जब तुम अभी तुम समझ रहे हो ये क्या हो रहा है, लाइक हम एक पर्टिकुलर ग्राफ को लेवल बाय लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल कर रहे हैं, तो दिस इज बीएफएस फॉर अ कनेक्टेड ग्राफ। ओके, तो ये बहुत ध्यान से सोचना,
ठीक है, कि एक स्टार्टिंग नोड से अगर तुम BFS लगाओगे, ठीक है, तो ये देखो अगर मेरे ये एक ग्राफ है और ये एक ग्राफ, दो ग्राफ, ठीक है, बेसिकली कनेक्टेड नहीं है, राइट, दोनों, करेक्ट, इन ये पूरा अगर ये ग्राफ है, राइट, दिस टू आर नॉट कनेक्टेड, तो अगर तुम इस पे BFS लगाओगे, राइट, तो ये सारी नोड्स तो कवर हो जाएंगी, तुम्हारी विजिट हो जाएंगी, राइट, बट ये वाला ग्राफ पूरा रह जाएगा, करेक्ट। तो तुम्हें यही प्रोसेस हर एक नोड के लिए चलाओ, राइट, अगर वो विजिटेड नहीं है तो, राइट, करेक्ट। अब वो देख लेंगे, अब आई थिंक यहाँ से आपको कोड में घुस जाना है, राइट, बट आप ऐसा समझो कि अगर अगेन हम इस नोड पे BFS चला देंगे, देन ये ग्राफ भी हमारा कवर हो जाएगा, करेक्ट। तो दिस BFS आप ये ध्यान में रखो कि दिस इज फॉर अ कनेक्टेड ग्राफ अभी, ओके। डिसकनेक्टेड ग्राफ में आपको अलग अलग कंपोनेंट्स पे क्या करना पड़ेगा, BFS चलाना पड़ेगा। चलो लेट्स मूव टू कोड। ओ भाई, ओके, तो हमें ये प्रॉब्लम दिया गया है जिग्स फॉर जिग्स में फॉर डूइंग अ BFS ऑफ द ग्राफ एंड रिटर्निंग एक लिस्ट जिसमें उस ऑर्डर में सारे नोड्स हो जिसमें आपने विजिट किया है। तो आपको पहला बात पता है कि ब्रेड फर्स्ट सर्च में जो ऑर्डर होगा, ये तो मुझे देख के पता चल रहा है, 0 2 3 1 एंड 4, ठीक है, लेवल 0 फिर लेवल 1 फिर लेवल 2, करेक्ट। तो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल हमें करना है, और बस ट्रिक यही है कि जब भी हम विजिटेड सेट में ऐड करते हैं, राइट, नोड को, उस मोमेंट पे आंसर में भी ऐड करते जाओ और आंसर को रिटर्न कर दो, करेक्ट। एक बार हम एल्गो अगर रिवाइज कर ले यहाँ पे, तो ये होता है कि हम 0 को विजिट करते हैं, ओके, एंड देन उसे क्यू में डालते हैं, फिर क्यू से पहला नोड निकालते हैं और फिर उसके सारे नेबर्स को एक्सप्लोर करते हैं। 2 विजिट मार्क करो, क्यू में डालो, 3 विजिट मार्क करो, क्यू में डालो, 1 विजिट मार्क करो एंड क्यू में डालो। तो हमारा ये स्टेप तो बड़ा कांस्टेंट है कि उस किसी भी नोड को हम क्यू से बाहर निकालेंगे तो उसे विजिट मार्क करना है और क्यू में वापस डाल देना है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें उसके नेबर्स पता चल पाए, है ना। तो यही है हमारा एल्गोरिथम, और जल्दी से इसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो हमने जैसा एल्गो में देखा था फंक्शन BFS, एक पर्टिकुलर नोड से जब BFS हम चलाएंगे तो हमारा कैसा दिखेगा एल्गोरिथम, राइट। फॉर एग्जांपल 0, तो जैसा कि मैंने बोला था कि एक विजिटेड हम एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, और उसे विजिट करो। पहले स्टार्टिंग नोड को हमने विजिट कर दिया, राइट। सेकंड स्टेप क्या है, उसे क्यू में पुश कर दो, ठीक है। क्यू एक नॉर्मल एरे अभी हम लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ है, हमें पता है स्टार्टिंग नोड के लिए तो हमें ये स्टेप खुद से करना पड़ेगा, उसके बाद हम क्यू के ऊपर छोड़ देंगे। हम बोलेंगे कि भाई क्यू में जब तक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तब हमें ये ऑपरेशन करना है। देखो, हमने क्यू से पहला एलिमेंट निकालना है और फिर उसके भी नेबर्स को ट्रैवर्स एक्सप्लोर करना है, ठीक है। तो क्यू डॉट शिफ्ट, शिफ्ट से क्या होगा ना कि क्यू का आपको पहला एलिमेंट मिल जाएगा, तो आपको उसी सीरीज में जैसे कि 2 3 एंड 1 क्यू में अगर गए हो तो आपको 2 ही बाहर निकलेगा जब आप क्यू से शिफ्ट करोगे तो, ठीक है, विच इज गुड, क्योंकि जब आप 2 को निकालोगे तो आपको अगला लेवल में 4 विजिट होगा, राइट, सीक्वेंस में, फिर 3 के नोड्स विजिट होंगे, फिर 1 के नोड्स विजिट होंगे। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट क्यू यूज करना। अब करंट नोड जब हमें निकल गया तो हमें पता है कि क्यू से निकाले हैं, तो भाई हमें पता है कि विजिट होने के बाद ही क्यू में गया है, तो हमें उससे तो मार्क नहीं करना है करंट नोड को विजिट, क्योंकि वो ऑलरेडी विजिटेड है। हमें क्या करना है, उसके नेबर्स को मार्क करना है। तो वी विल टेक एवरी नेबर ऑफ द करंट नोड। वो कहाँ से पता चलेगा मुझे, एडजेंसी लिस्ट से। उसके पास सारे नेबर्स को हम इटरेट करेंगे और विजिटेड मार्क कर देंगे, ठीक है। और विजिट मार्क करने के बाद वापस क्यू में डालना होता है, ठीक है। तो ये देखो सेम चीज़ हम यहाँ पे कर लिए। Do you want to become a front-end developer? With Log2Base 2, you'll master front-end concepts. ओके, ये हो गया, हमने नेबर को ये कर लिया। अब इसी मोमेंट पे हम अपना आंसर बनाएंगे, ठीक है, आंसर डॉट पुश नेबर, ओके। और एक चीज़ है, ये मत भूलो कि हमने शुरू में भी एक आंसर बनाया था, स्टार्ट नोड को भी तो विजिट किया था, तो उसको भी शुरू में पुश करना होगा, फिर उसके बाद ये सारा प्रोसेस चलेगा, राइट। तो ये मेरा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का रिजल्ट तैयार हो गया। वेरिएबल्स जल्दी जल्दी इनिशियलाइज कर लेते हैं हम लोग, राइट। तो देख रहे हो, मैं पहले वेरिएबल्स यूज कर रहा हूँ ताकि हमें क्लियर हो कि हमें क्या चाहिए या नहीं कोई वेरिएबल, करेक्ट। तो हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लिए एम्प्टी ऑब्जेक्ट से, आंसर को इनिशियलाइज कर लिए एम्प्टी एरे से, और क्यू को भी इनिशियलाइज कर लिए एम्प्टी एरे से, ओके। ये मेरा ऑलमोस्ट सही चल रहा है अभी। तो एक चीज़ हमें और करना पड़ेगा कि जब इस मोमेंट के बाद हमें बेसिकली आंसर रिटर्न करना होगा, बट देखो हमें अभी फर्स्ट फंक्शन हमने डिक्लेयर किया, अभी हमने फंक्शन कॉल नहीं किया है कहीं भी। हमें फंक्शन कॉल सारे नोड्स के लिए करना है, करेक्ट, जो कि अनविजिटेड है। देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इस केस से ना सारे डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स भी हैंडल हो जाएंगे। देखो अभी जो मैं लिखने वाला हूँ, डिस्कनेक्टेड ग्राफ कंपोनेंट्स, ध्यान से देखो कि जब मैं यहाँ पे 0 से BFS स्टार्ट किया तो ये सारा
के सारा नोड्स तो विजिट हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई डिटैच्ड कंपोनेंट है यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल, तो वो तो कभी नहीं विजिट हो पाएगा। तो क्यों ना सारे नोड्स पे बीएफएस चला दो इस पूरे ग्राफ के, है ना, तो ऑटोमेटिकली सारा का सारा नोड्स में बीएफएस चल जाएगा और सारे के सारे विजिटेड हो जाएंगे। तो अभी मैं वही करूंगा, तो वी विल गो एंड डू बीएफएस फॉर एवरी नोड इन एडजेंसी लिस्ट। ओके, तो ये एक तरीका है जिससे हम ऑब्जेक्ट का की निकाल सकते हैं, राइट। एंड इसमें हम क्या करेंगे, इफ सॉरी so if the node is not visited, right, go and do the bfs of the node। ये हमारा डिस्कनेक्टेड ग्राफ भी हैंडल कर लेगा, राइट। हमें पता है एक नोड पे हम बीएफएस रन करते हैं तो वो सारा कवर हो जाता है कनेक्टेड कंपोनेंट, तो क्यों ना सारे ही नोड्स पे रन कर दो, तो ऑप्टिमिस्टिकली सारे ही कवर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे मुझे आंसर अपना रिटर्न कर देना है आफ्टर दिस फंक्शन, बिल्कुल एंड में जब सारा काम हमारा खत्म हो जाएगा। तो ओके, रिटर्न आंसर, होपिंग कि कुछ इश्यू ना हो, बट लेट्स सी। ओके, क्या इश्यू है, क्यू डॉट पुश स्टार्ट नोड, क्यू ऑलरेडी अच्छे से इनिशियलाइज है ना सारा कुछ, क्यू डॉट पुश स्टार्ट डिफाइंड, व्हाई इज इट सेइंग क्यू इज, ओह सॉरी कॉमा मिसिंग था, राइट। लेट्स सी नाउ। अब देखो टाइम लिमिट एक्सीड इसलिए हो गई है क्योंकि हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ना, हमें सिर्फ अनविजिटेड नेबर्स के लिए करना है, राइट। तो ये हमें चेक लगाना पड़ेगा कि भाई जो नोड, अगर कोई नेबर ऑलरेडी कहीं से विजिट हो गया, राइट, साइकिल्स हो सकते हैं ग्राफ में, कोई और नोड जाके किसी और नोड के नेबर को भी विजिट मार्क कर सकता है, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे साइकिल्स है। तो हमें बस ये चेक लगाना है कि भाई अगर ऑलरेडी विजिटेड है ना तो उसको वापस से क्यों डालना क्यू में, राइट, या वापस से उसको विजिटेड भी क्यों मार्क करना, क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है। नाउ लेट्स, ठीक है, हमारा प्रोग्राम चल चुका है, लेट्स सबमिट इट। हमारा सारा टेस्ट केस होपफुली
Do I need to know something before the graph thing, or like can I learn graph in any order? The fuck drafting? You can learn graph in any order, but you will save massive amount of time if you learn in specific. Right. So There is a lot about the job that isn't actually that fun that I have now automated away almost entirely. It's really common that you run into merge conflicts. You're finally ready to merge something and there's a conflict. Your CI is failing. But I have a green PR's automation here that uses some of our skills. And this is going to go through and it's going to say, like, do any have CI failures because of like something linted wrong or like didn't get. So with this video, we will be starting off with the graph series, and the first video in the series will be Introduction to Graph, where we will be learning about what different kinds of graphs we have and all the conventions that revolve around the graph that will be used going forward in the next set of videos. So you see the structure, okay? Now this. So the BFS and DFS belongs to the graph or like of a tree. So बोला था शो लिख रहा पड़ेगा शो नहीं so. Both belongs to graph and trees. So, did graph come first or like tree come first? Came. Electric. What the fuck electric? चूतिया है क्या? Did graph come first or did tree come first? Oh. Oh bhai साहब. 121 years later, some motherfucker has invented trees. Why this makes perfect sense. So it's saying like DFS and BFS were used in the graph and later came into the picture when tree were invented. He wasn't solving a bridge riddle, he was studying a chemical bonds, and yeah, this motherfucker's like doing something unusual and just they're inventing some beautiful stuff, bro. He was literally studying chemical molecules, isomers, and he realized like a specific molecular bond form path never loop back in themselves. What the fuck? This guy is like literally by accident invented something and become fucking famous. Like what the fuck, bro? Now it's so fucking hard to do something. Like literally, we have everything in the market. Oh my god. Do you have any real-time examples for the graph and trees like which we use in our daily life, day to day? Yes, you use graph and trees every single day without realizing it. Let me see. Easiest way to remember the difference in the life is the graph of the interconnected network. You go in circles like map on social medias, hierarchy, hierarchy, hierarchies with clear paths, no loops, like folders of family tree. But family tree is like example of tree, I know that. And here's exactly daily examples you interact with. Google Maps, navigations uses node. Every node is an edge. Traffic app uses the graph algorithms to find the fastest path through these roads.
social media network tools. What the fuck? So they're using a graph to connect this all the shit. I had known this thing, but not in depth. The World Wide Web, yeah. It's kind of directed edge. Wow, interesting. Electricity and water grid. Oh my god. Computer file systems, yeah, this is like some sort of tree, right? Family tree. See how these works in real life help us to bridge gap of coding. If you want, we can do any of this, write a JavaScript code for file system code. Hell nah, bro. This Structure is generally known as a graph. Now let's talk about the types of graph. Now this structure is known as an undirected graph. Why? I will tell you. Whereas this structure is known as a directed graph. You would have guessed why, because you see arrows over here, that is why directed. You don't see arrows over here, that's why undirected. But what are these things? We need to know that as well, right? So let's understand. So in graphs, you will see these circular things, okay? And those are generally known as nodes. Remember this, nodes or vertex. We generally call them as nodes or vertex. Now these nodes are represented by a number. Like for an example, I said this is the node 1, this is node 2, this can be node 3, this can be 4, this can be 5. There is no specific order in which you number the nodes. The numbering of the nodes can be in any order. Remember this. So over here, how many nodes we have? We have exactly 5 nodes. So we write the number of nodes as 5. Remember this, the number of nodes as 5. We can also call this as V, which is the number of vertex. Now every node, like if you see this, 2 nodes are connected, right? These 2 nodes are connected by a horizontal line. Now what is this horizontal line referred as? This horizontal line is referred as an edge. So if I be specific, this edge can also be known as or called as undirected edge. Why undirected edge? If you see, the edge can also go from 1 to 4, right? Or the edge can also go from 4 to 1. So it can be a bi-directional edge. The edge can be in both the directions. So thereby, whenever you see an undirected graph and there is a mention that there is an edge between u and v, it resembles that there is an edge between u and v, as well as there is an edge between v and u. So an undirected graph means there can be an edge in both the directions. So as of now, we just need to know about these terminologies: node, vertex, undirected edge, and this is known as an undirected graph. Okay, now is it compulsory that the graph has to be something like a circle or something like that? We will be talking about that, but before that, let's understand what is a directed graph. Now the only difference in a directed graph is this thing that you see over here. This will be a directed edge. Remember this thing will be a directed edge. Rest everything will stay the same. Imagine if I number this 1 and 4, then I can only say that there is an edge between 1 and 4, which means if I'm standing at 1, I can go to 4, but if I'm standing at 4, I cannot come back to 1. So this is what we call as directed graph. A directed graph is a graph where all the edges, please mind this word, where all the edges are directed. Where all the edges are directed. Can there be multiple directed edges? Yes. भाई इसमें तो डायग्राम है ही नहीं भाई, मैं कहाँ से डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड करूँगा? पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं. You can also have something like this where you say there is an edge between 1 to 4, there is an edge between 4 to 1. So you can also have bi-directional edges as well. So that is the two kind of graphs that we generally have. One is the undirected graph, while the other one is the directed graph. So that was about the types of graph. Now let's understand the other type of graph. Now there are something known as cycles in a graph. Remember this, cycles in a graph. Now you might be thinking, what does graph mean? Is it always a circular structure or what it is? Now I can say, if I just draw some graphs, this is also a graph. We don't see a circle. Yes, we don't see a circle getting completed. We can say this is also a graph. Now you might have read in the binary trees. If you have not read binary trees, you can definitely read them from my playlist. So this is a binary tree, but this can also be called as a graph. Why? Because it follows all the rules. We have nodes, we have edges, and they are perfect.
and that is what is the minimal condition for anything to be called a graph. So this guy Video can also be called a graph. So a graph does not necessarily means that it has to be an enclosed structure. It can be an open structure as well. Okay, so this is where something as cycle comes in. Okay, now what is a cycle? Cycle definitely means if you're starting from a node, you reach back to that node. Remember this, start from a node and end at that node. That is the definition of a cycle. Now if you carefully observe over here, can I say this has a cycle? Yes. Why? Because if you start from 1, you can go to 2, you can go to 5, you can go to 4, you can come back. So there is a cycle in this graph. There are multiple cycles. You can also say this is a cycle. You can also say this is a cycle. So there can be multiple cycles. So if there is a single cycle in a graph, you generally call that as an undirected cyclic graph. Undirected cyclic graph. The definition graph does not assume साइक्लिक ग्राफ एक होता है जिसमें starting with first edge, first node, 2, 3, 4 ऐसे 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 कनेक्टेड रहेगा इन्फिनिटली यहाँ पे चलता जाएगा. दिस इज साइक्लिक. Okay. Assumes that it is an enclosed structure, but the moment you attach the term cyclic to it, we can always call it as an undirected cyclic graph. I hope that is sure. Now let's come back to this example and let's omit this. Now this is a directed graph. Do we see a cycle over here? Now this, no. Do we see a cycle here? No. Do we see a cycle here? No. So this directed graph does not have a cycle because we are starting at 1 but we are not ending at 1. Or we are starting at this particular node, but we are not ending over here. So unless and until we start from a node and we end at there via some path, I'll tell you what path is. We don't call that as a cyclic graph. So we can call this as directed, like acyclic graph. So it's generally known as acyclic graph. Acyclic means no cycle. So directed acyclic graph is what we call this. Okay, but over here, if I just attach a edge, if I just include another edge, we can say that this graph has a cycle. Why? Because yeah, this is a cycle. So it will now become directed cyclic graph. But without this edge, it is known as directed acyclic graph, which is commonly known as DAG, which you will be hearing in the next set of the lectures. Fine. So let's come to the next term, which is path. Now what is the definition of a path? Can contain a lot of vertices, contain a lot of nodes or vertices, and each of them are reachable. Very important. Each of them are reachable. Okay, so what does this mean? So assume I write something like 1, 2, 3, 4, 5. So we know that this is a graph. Again, satisfies all the definition. You have nodes, you have edges. So this is definitely a graph, right? So over here, what we see is, if I write 1, 2, 3, 5, it is a path because 1, 2, 3, 5. This is a path because you go from 1 to 2 to 3 to 5. This is a path. But if I write something like 1, 2, 3, 2, 1, this is not a path. Why? Because you're saying 1, 2, 3, and again you're saying 2. You cannot have a node appearing twice in a path. A node cannot appear twice in a path. Remember this. A node cannot appear twice in a path. It can only appear once. Is this a path? No. Why? Because you say. But what if we have a duplicate value? Then the node can appear twice, right? मान लो मेरा फर्स्ट मान लो मेरा फर्स्ट 1 है, and after that we have 2, and after that we have 3, 4, and again if we have the value as 3, so will this not be a क्या बोलते हैं उसको? So we ignore the duplicate value in the graph. Look at this. If 1 have a node appearing twice in a path because you're saying. But if I write something like 1, 2, 3, 2, 1, this is not a path. Why? Because you're saying 1, 2, 3, and again you're saying 2. You cannot have a node appearing twice in a path. A node cannot appear twice in a path. Remember this. A node cannot appear twice in a path. It can only appear once. Is this a path? No. Why?
because you say 1, you say 3, you say 5. But how do you reach from 1 to 3? There is no connectivity from 1 to 3. There is no edge from 1 to 3. So you cannot. So a path that you're writing, the adjacent nodes must have an edge between them. Like 1, 2 has an edge, 2 and 3 has an edge, 3 and 5 has an edge, so that you can travel in that path. So that is what is the definition of a path. So the next term that we will be learning is the degrees in a graph. So assume if I name them as 1, 2, 3, 4, 5, and I say, can you tell me the degree of the node 3? So remember, the definition of a degree is the number of edges that go inside that or go outside that total. So I can say there is 1, 2, 3, which is attached to 3. So the degree of 3 is 3. Similarly, the degree of 4 is 2. Why? Because there are 2 edges which are attached to it. The degree of 5 will be 3. The degree of 2 will be 2. And the degree of 1 will be 2. So the definition of a degree for an undirected graph, very important, for an undirected graph is the number of edges that are attached to it is known as the degree of the graph. And there is a property as well. Please take care of this property. The property states that the total degree, yes, the total degree of a graph is equal to twice of the number of edges, is equal to twice of the number of edges. Why? Because every edge is associated to 2 nodes. That is the reason. Why? Because every LeetCode मेरे को ये समझ नहीं आया, इसकी वजह से मैं ग्राफ देखने लगा। रिटर्न में 2 to the power of ये करना था, बट मेरे को फ्लैटन नहीं करना था। दिस इज लाइक डिफरेंट क्वेश्चन, ग्राफ का क्वेश्चन है, आंसर इसमें मार्क नहीं के ट्री लिखा पड़ा है। अनडायरेक्टेड ट्री मतलब ग्राफ ही होता है क्या है भाई? अनडायरेक्टेड ट्री ग्राफ है। कनेक्टेड acyclic, अच्छा रिपीटिंग साइकिल्स नहीं है। I mean like one time one node can be visited. In this structure, vertices are connected by bidirectional edges. इसमें there is no designated parents or children's node. Because it is acyclic, there are no closed loop. Because if it is connected, every part of distinct vertices is joined by exactly one path. Every edge is associated with 2 nodes. So let's compute the degree. So the degree of this is 2, again 2, 3, 2 and 3. So if I compute the total, we will be getting 6, 3, 9, 12. So the total degree of this graph is 12. And if I compute the number of edges, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 number of edges, and the property gets satisfied. Intuition is very simple. Every edge is connected to 2 nodes. Thereby this particular property stands. So this was for undirected graph. Now let's talk about something which is directed graph. Now remember this, in directed graph we have 2 different things. One is the in degree of a particular node, while the other one is the out degree of this particular node. Now what do you mean by in degree or out degree? So imagine this is the graph. Okay, so let's quickly draw a graph. And perfect. So if I ask you for this particular node, okay, I ask you for this particular node, what is the in degree for this node? What will be the answer? Assume this node is node number 3. In degree of 3. The number of 1, 2, 1, 2, yeah, 1, 2. Since this is not pointing towards this thing, we can only consider this 2 thing, I guess. Like, do answer on here. Incoming edges. The number of incoming edges, the edges that go inside it, is the in degree. So that's 2. So if I ask you, what is the out degree of that particular node? Out degree मेरे को बस एक दिख रहा है यहाँ पे। Out degree of this one is this thing, so we have like only one. The number of outgoing edges, that is only 1. So you can say the out degree is 1. So the in degree and out degree will be in this way. So that will be in terms of directed graph. Now the last term that we'll be learning about is the edge weights. Now, it's very important to understand what is an edge weight. Now we talked that, okay, these are nodes and this is an edge. Now, यही क्वेश्चन था, वेट edge weight. Oh, yeah, live bro, live. Learning live bro. every edge will be having a weight. Now in problems that you'll be facing, they might say that this edge has a weight 3, this edge में weight कैसे होगा? नोड में weight होगा ना भाई, ये डंडा में weight कैसे होगा? समझा नहीं।
Where is my escalator? What the hell? This isn't Danda right now. Oh, where is my image, bro? Yeah. There is my image now. We have to calculate Edge the might have a edge weight weight. 2, this might have 1, this might have 5, this might have 6, this might have 2, this might have 1, this might have 5, this might have 7. They can assign any weights to any edges. And this is what we call as They have assigned the weight. But they have given the value of the node, I guess, like 1 and 2. 1, 2, 1, 3, 3, 4, 3, 5. I don't see any connections. edge Maybe I weight. need to What if learn more. weights are not assigned, like they don't tell you what are the weights? In that case, we will always assume unit weights, which is 1. If the weights are not assigned, we assume unit Why weights, not that is 1. So JavaScript? guys, that will be it for this JavaScript particular video. I is. hope you understood everything that I taught in this particular video. Just in case you did, please hit that like button. And if you're new to our channel, what are you waiting for? Kill that subscribe button right away. And if you haven't checked out our DP series and all the other series, the links are I'm in the already description. Please make sure you check them out. subscribed. With this, I'll be wrapping up this video. Let's meet in the next lecture. Till then, bye-bye. Take care. Whenever your heart is broken. What are you guys talking about? Like, how many languages did you know? I am start learning Python by CS50 Python. It is good for starting my first language like this. Yo, I can't give you advice since I'm fucking jobless right now. But you can join my Discord where people are like more knowledgeable and most of, I guess not most of the people, but few of the people are working in big companies and they might be able to guide you through the. Don't ever forget you're golden. I will find a light in Bro, is the graph hardest topic? Did I really pick a biggest topic in PSA? Oh my god. Oh shit. Oh damn, bro. Oh. We have some admissions here, pineapple. I like this. Okay, let me learn. ஹர்ஷ் ஹைஃபை கிளாஸ்மேட் நோட்புக் வாங்கி நீ ரொம்ப முன்னேறிட்ட. நீ என்ன சொல்ற ரிஷப்? So in the previous video, you did learn about graph and its types. You must be thinking, which is the complex data structure that we will be using to store graph in our programs. Now, in this video, we will be learning about how to represent a graph in C++. The next, it's going to be Java. Okay, so imagine this is the particular graph that is C++. Oh my god. given to you. Now, there will be two portions. Obviously, someone will Use Brave to avoid ads. Let the ad come, man. He deserves some money. How you take notes? I'm not taking notes. Like this is. Oh, you're talking about this thing. This software. I mean, not software. This website is called as an Excalibur, where like you can draw things and you can write something. Someone message. Yo, Wrench, what's up, man? give you the input. So the first portion is the input, and next will be how do you store it. Okay, so first let's understand
the input of a graph, and then First, we I can need to learn think about how how to to store a store data them structure. in So the in C++ all the questions, and then what they will tell you is convert it to a given n and m. JavaScript thing. Okay, they'll always tell you given n and m. And the starting of the question, they'll tell you It'll be if the crazy. graph is a directed one or if the graph is an undirected one. If the line states given a graph, given an undirected graph which Where did you see? Did you see my this thing? Yeah, I'm subscriber of him. contains n nodes. Yeah, but I'm not smart as him, bro. I'm dumb as fuck. And m edges. So n will मतलब एन एन एम मिल जाएगा मेरे को एन एन एम मिलेगा तो इसमें एन एन एम है ही नहीं एन ओ आप समझा एन एन एम बोल रहा है इसको एन एन एम बोल रहा है क्या ये एन है ये एम रहेगा आई गेस आई डोंट नो मैं क्या क्या कर रहा था कुछ भी कर रहा था इसका बाद में इसको क्लियर करूंगा जब टॉपिक क्लियर हो जाएगा will be given to you. So n nodes and m edges. So the first thing that you will definitely do is you'll take the input of n and m, right? I will So try over till here, what is the 12 number of p.m. nodes? The number of nodes 12 over here is a.m. 5. The number of 12 edges a.m. is after 6. that I 1 will edge, just 2 edge, 3 edge, 4 edge, look up 5 for edge, the 6 edge. answer man So the number of edges उसके is बाद में 6. से नहीं The हो number पाएगा of edges is 5. So in the input, 5 12 and बजे 6 तक will be will given to try you. to Just do 5 and on 6. my own You have to after assume learning the the first one is concept node how to and the do next one is the number of edges. Now, then if they're उसके saying बाद you I will edges, try to in order to do the represent a graph, question you have to understand the edges are if between I'm which not able nodes. to do Now, them in the next line, they will be giving you m bye lines. Remember this. bye M lines that will represent edges. M lines that is going to represent edges. So, for example, if there is an edge between 1 and 2, the input might tell you 1, 2, or the input might tell you 2, 1. It can be either way. If they tell you 1, 2, we assume that there is an edge between 1 and 2, and there is also an edge between 2 and 1, right? अच्छा So, ये obviously, 2, 1 means 1, 2, and 1, 2 means 2, 1, vice versa. I can say that there is an edge between 1 and 3. I can say there is an edge between 2 and 4. I can say there is an edge between 3 and 4, 2 and 5, and 4 and 5. So, I have written all the 6 edges. Do they follow a specific order? No, they can be given in any order. So this is the next set of input. So the input will be containing like this: 2 1, 1 3, 2 4, 3 4, 2 5, 4 5, right? So this is how the input will be. So you have to assume the first line, this is n, this is m. The next set of lines, m lines, are the number of edges. Is there any specific edges अच्छा अब रिप्रेजेंट करेंगे इसको oh bro where is it thank god we have an undo button here okay now we have the edges as he has something boundary on the number they of are edges? Is it similar to somewhere related to the number of nodes? No. If I draw one more edge, it becomes 7. If I draw this one is more edge, my it becomes more. If I draw one more edge, n it becomes more. If I draw one more edge, it becomes more. They can be, m like m can be anything. N will be constant, but m can be anything. Okay. So this is how we take input. Like this is how the input will be given. Now the question comes, how do we store? So there are two ways to store. One is the matrix way, and the second one is the list way. Okay. So first let's learn about the matrix way. So the first way is to use a matrix, and we generally call that as an adjacency matrix, the way that we use. So assume that this is the graph, okay, and these are the edges that are given to you. Now you need to store these edges somewhere. Either you can store these edges, or these edges has to be stored somewhere so that the future algorithms can be performed. So where will you store these edges? This is where something like a matrix comes in, okay. First thing that you'll observe is the number of nodes were 5. Are the nodes 0 based or 1 based? And we see the nodes are 1 based. If the number of nodes are 5, the last node is n equal to 5. So it is 1 based indexing nodes. Okay. So what you will do is you will define an adjacency matrix of n plus 1 and n plus 1 size, which is this. And it will have the indexes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Now if ये दोनों सेम है क्या why do I feel like both are same but there is pretty yeah we don't have 2 4 here 3 5 is here and we don't have 4 5 pretty much closer how much do I have to take now he has taken like 1 2 3 5 1 3 4 5 6 6 1 2 3 4 1 2 3 I have to take till 3 0 1 2 3 0 1 2 3 right 3 okay, let me draw that thing let me remove this since what the fuck now we have to draw this box thing now for him it was like 6
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. For us, like 0, 1, 2, 3. So 0, 1, 2, and 3 here. So we have to 0, 1, 2, shit. 0, 1, 2, 0, 1, 2. 2 and 3. Now we have the box. They tell you that there is an edge between 1 and 2. What you do is, you go to 1 and you go to 2 and you take the intersection, yes, and you mark it as 1. And did I tell you, if there is an Edge between 1 and 2, it means there is an edge between 2 and 1. So edge between 1 and 2. There is one. This is no one. The fuck, it is so low for me. So you go to 2, you go to 1, and the intersection is 1. The thing that actually turned my trading career around was not a new trading indicator, it was not a new strategy, it was not a new broker. It was actually me. I had to take me out of the equation. I had to eliminate myself because the biggest problem in my trading was the same strategy. When I was executing that strategy, it was a loss-making strategy in real markets. But perfect. Next, there's an edge between 1 and 3. So 1 and 3 is marked as 1, and 1 and 3. 1 and 3. 1 and 3. 1 and 2. 1 and 3. 1 and 3. Fuck. 3 and 1, right? 3 and 1. 3 and 1 is like here. Reverse of it. And 3 and 1 is marked as 1. Next you go to 2 and 4. 2 and 4 is marked as 1. 4 and 2 is marked as 1. Next you go to 3 and 4. This is 0 in this. What the fuck? 1 is here. And for 3 and 1. 1 and 3 is here. And for 3 and... Yeah, 3 and 1 is here. Okay. 3 and 4 is marked. 3 and 4. Was 3 here? What the fuck? I don't have 4. 0. 0. Where the fuck is my 4th one? Oh, we had to take n plus 1, bro, that time. But if I do this, then I don't have 5. Ah, shit. Do I have to take the highest number possible? That might be the case, I guess. So we'll add one more, and I'll add one more. I think. 4, 5. Hell nah. So fucking messy. Now we have this 3 and 4. 3. This is my 4, right? 3 and 4. 3 and 4 here. 4 and 3. 4 and 3 here. 3 and 5. 3 and 5 here. 5 and 3. Here we have marked it now. Marked as 1. 4 and 3 is marked as 1. So in this way, you can mark all these edges like 3 and 5, 5 and 3. Next 4 and 5, 5 and 4. So all these edges are marked as in the adjacency matrix. Now all the remaining guys will be filled on with
zeros. You can, or you can just leave them. All the remaining guys will be filled on with zeros. So this matrix will tell you if you want to check if there's an edge between 3 and 4. Yes, there is. If there's an edge between 4 and 2, Hi yes, there is. bro, hi Is there an Sai, edge between hi. 5 and 2? No, there is no edge. So this matrix is going to tell you if there is an edge between a particular node to another node and how much space are you using. Remember this, the space that you'll be using will be n cross n because you're using almost like n plus 1 into n plus 1, which is equivalent to n into n space is what you will be using. And this is a costly thing. Yes, this is a costly thing. But if we're moving on to the next thing, which is cheaper, let's check out the code super quick. So what did I say? The first line will contain n and m. So define n and m and take it as input. Done. Now if it is something like one based indexing graph, you take like this. If it's a zero base, then you take a n cross m and that will work. Now, what is the next lines containing? It was containing m lines. So you just run a loop for m lines. And you know, for every line, they will be giving you that there's an edge between u and v. So you take them as input. What did I say? Have the intersection marked as 1 and have the reverse intersection marked as 1 as well. So both them. So in this way, I can say the entire graph has been stored here, right? And what will be the time complexity? This is big O of n that you took to store the graph. After that, we can perform the algorithms, but at first, it's very important to understand how You did to store a something, graph. but I couldn't understand that. Right? Convert it to a JavaScript for now. What is that? This thing? Urgency, 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 or urgency. Welcome to the graph data structure representing the graph in urgency matrix. Why the fuck are you welcoming? JavaScript means using 2D array, an array of arrays filled with zeros and ones. Since you did not paste your original code below, complete beginner friendly implementation. So how to create and build and print an urgency matrix. What do you mean by urgency? Oh my god. That's so shit. Like a new set. Don't you have a functional way of doing this? Like, need to really go fast thing? Convert this code to. Yeah, I will write a clean JavaScript code. Yeah, you right. Below is ES6 conversion for the JavaScript representation of traversal of typically covered drivers. The provided edge used to build an undirected graph adjacent this graph constructor vertices is directed calls. This dot adjacent is
Values or values word after. Build an immutable adjacency list from edges undirected will graph it. Okay, I need to at least do a single question today. Where is it? Find the performance of it. Let me try this. But don't even need a I need an array hash table graph variable. Here is the hardest question. This seems like an easy question based on the tag, but I think it's not. In town there are 10 people labeled from 1 to n. There is a rumor that one of these people is secretly town judge. So we have to find the town judge now. If town judge exists, then town just trusts nobody. I don't know what the fuck. Everybody except the town judge trusts the town. Yeah. He's like a fucking imposter. There isn't exactly one person that satisfies the properties of 1 and 2. Either. Representing the person labeled A of the trust B of I. If trust relationship does not exist, then trust array. Then such trust relationship does not. Table of town judge is a town judge map exists. Why did I read a map exists? Judge exists and can be identified or written. Oh, you're saying like if there is no edge between two things, then I have to return minus. How do we do this? They have given me n value. They have given me n value and also given me the edges. Let me ask a method how to do it. If I am given the n and the edges for a graph, what need to be checked? Yeah. Show me the code. Check connected. If my n is 0, then return true. An empty graph with no node is technically connected. Build adjacency list. This is what he was trying to build, right? Adjacency something. This is same, but he has pushed something called a fun. But here we are pushing an empty array. Neighbors of graph node. From where did the node come? Oh, DFS node.
Do you have to only traverse through this thing, or like you have to do something else? How will I know? If there is any size, if there is any extra element, then we have to return -1. If n equals to this thing. Okay, if n equals to this thing, then this thing, otherwise we are going to return -1. So this is how we traverse the, what do you call that graph thing in DS, I guess. So first we have to check my n value is 0. Is this my base condition or something? I guess some sort of base conditions, I guess, I have to stop my something. And we are going to maintain a graph object. Now we are going to iterate till my n. I'm going to fill my graph with empty array. After that we are going to push u and v of edges. Then we are going to create a set called a visitor, and now we are going to run a df since we have found the graph. So this is the method of forming the graph in general. First we take graph object and we are going to push it with empty. First iterate till n, push the empty thing. After that we are going to push the values inside them, like for u. If we are connecting them, like for connecting them we have to do first index, second index, first index. My visitor is going to be new set, and we are going to add my node every time. And if my neighbor of node, let my neighbor of node of graph node, if visitor not has my neighbor, then you do DFS, otherwise you don't do DFS. Then my DFS starts from 0, and visitor size is equals to is 2. So let's start doing this thing. First we have to go. So we have trust, which is similar question, I guess. N equal to 0. Then we are going to return. And now we have to find graph object. Set thing, set for the visitor, and here we are going to do DFS. Let's get graph. Graph equals to this thing. And since we have this n, what we can do is like we can put it in. For every graph of I, we are going to push an empty array. And now we have the graph. For every u and v, we have to push them and connect them. For const of u v of graph, we are going to push u to v, v to u, some sort of connection. So for graphs u index, we are going to push not like this, push v, and for v index we are going to push same thing, graph of v, just mapping them. Graph of v equals to graph of u. If n equals to 0, then
0. I have to return 0 or something as well. And for this visited, we are going to have a set, so we don't have to delete that set. And now we are going to have function DFS, which we are going to traverse now. And every node will be added here inside it. Now we have to see for let neighbor of graph, or like if my neighbor of graph is there. Hey, I'm not even using the trust here. It should be trust. I'm destructuring my graph. How can I destructure it? So this should be trust of mine. Trust of node. For every neighbor, if this is not true, then you do this. If not of visited as my where the has are like neighbors, then you do the DFS of current node. Otherwise, DFS of 0 is going to start and return my, what do you call it? If my graph size, if my n equals to my, what was the condition for that thing? Visited size is equal to 10. If my visited dot size equals to n true visited size, or my visitor has my name. Visit neighbor itself. Okay, let me see if this one. This is what we learned, right? This same here content. It shouldn't have. Did it do something wrong? Off edge or off edges, I did the same thing. For each and everything, we are going to push it inside. That is what I did. They're saying that just because of fonts it is not working. I will let. It says it can't find the ending. But my trust directory have the value. What are you saying? This is why I'm getting the same fucking thing again. Graph of V, push my U, the mapping like U to V, V to U. Did I wrote wrong syntax?
This is what I do. It's the same. Why am I doing it? For every neighbor, you check if graph of node has it. Then you don't check if visited has or not. Has, right? Visited has, yeah, visited has neighbor. Visited has neighbor and DFS of node. So it checks again the same shit for everything. So this in graph of I. Didn't I push it right? In graph of I am going to create this thing. Did I push something wrong? Like no, just right. For every index till n, I'm going to push empty array. And after that you're going to push the values essentially. Making a map of whole stuff like this. We have a graph here. We have a graph here and we are pushing an empty array so we can maintain the, what do you call it? So I don't need this thing like since this is undirected graph. So only need for undirected graph. What the hell? Bro, no answers. Let me know why we are getting. The fuck? Yeah, I should give up. I should give up LeetCode. Not even close enough. No, bro, this is fucking easy question. What the fuck? This is easy question. Graphics, my. Oh my god, until here it is right. How the hell is doing it? Find the candidate. First of all.
Search candidate. that you took to store the graph. After that, we can perform the algorithms, but at first, it's very important to understand how to store a graph. So in the previous method, we saw that it was taking n square space. This is where something like adjacency list comes in, and it takes very, very less amount of space. Now, what is an adjacency list? We use an array. Yes, we use an array. But the array that we will be using, like over here, we see that the size is 5, right? And we're using an one-based graph, one-based indexing graph. So what we will do is, we will create an array of n plus 1 size, which is 6 size. And ஹர்ஷ், ஹைஃபை கிளாஸ்மேட் நோட்புக் வாங்கி நீ ரொம்ப முன்னேறிட்ட. நீ என்ன சொல்ற?
which is the complex data structure that we will be using to store graph in our programs. Now, in this video, we will be learning about how to represent a graph in C++. In the next, it's going to be Java. Okay, so imagine this is the particular graph that is given to you. Now, there will be two portions. Obviously, someone will give you the input. So, the first portion is the input. So in the previous video, we did learn about graph and its type and all the other terminologies that are used in graphs. In this video, we will be learning about how to store such a complex data structure in Java. So I'll be breaking the video into two parts. The first being how's the input of a graph given to you. That is very important to understand. While the next being how do you store it, or which data structure do we use to store it. So let's understand about the input. So if you see, this is a graph data structure, and the first thing that they will tell you is n and m, where n is nothing but the number of nodes and m is nothing but the number of edges. For this graph rather, the number of nodes are 5, the number of edges are 6. Why? Because 5 nodes, number of edges 1, 2, 3, 4, 5, 6, number of edges 6. That is something which we know for sure. Now, the next thing that they will tell you is given m lines, and those m lines will represent all the edges. And I'm talking about undirected or undirected graph as of now. At the end, I'll tell you what is the change that is required for directed graph. So they can give you 1, 2. Now 1, 2 resembles this particular edge. They can give you 1, 2, or they can give you something like 2, 1. Either of them. Next being 1, 3, 3, 4, 2, 4, 2, 5, 4, 5. Order can be anything. 1, 3 can be at first, 2, 4 can be at first. Order can be anything. As long as they are telling you about all the edges, that is what matters. So nm in the first line, and the next will be containing this. So the input will be something like 5, 6, which represents n and m, then 1, 2, 1, 3, and so on till 4 and 5. This is how the input will look like, right? Now, it's a complex data structure. So you might ask, but Trevor, how do we store it? So in order to store it, we're going to use two things. One is the matrix, which we call as adjacency matrix. And the second is list, which we call as adjacency list. So in order to store the graph in a matrix, the first thing we need to observe is the graph a one-based indexing graph or not? So if you carefully see, what do you mean by one-based indexing? The nodes are numbered from 1 till 5, where the number of nodes are 5. So it's a one-based indexing graph. Okay. So what you will do is, you will define a matrix, a 2D matrix of n plus 1 and n plus 1 size, which is 6 cross 6. Why 6 cross 6? So that you have the fifth index with you. Done. Now what you will do is, you will go to the first edge that is given to you, 1 and 2. And you'll go to the first row, second column. And the intersection is where you'll say 1. 1 symbolizes there's an edge between 1 and 2. And there's also an edge between 2 and 1 because it's an undirected graph. So what you'll do is, you'll go to 2, you'll go to 1, and at the intersection again, you'll put a 1. So this is how you can store the edge. Next, 1, 3. So you go to 1 and 3, mark it as 1, and 3 and 1 and mark it as 1. Next you go to 2, 4, mark it as 1, 4, 2 and mark it as 1. Next you go to 3, 4, mark it as 1, 4 and 3, mark it as 1. Next you go to 2 and 5, mark it as 1, 5 and 2, mark it as 1. Next you go to 4, 5, mark it as 1, 5, 4, mark it as 1. This is how all of these things are stored in a matrix. All the remaining guys can be easily filled up with zeros. 0 means there is no edge. 1 means there's an edge between the ith row, like ith node, and the jth column. Okay, that is the definition of 1. Now, how much space are you using? I can say I'm using n square space because I'm approximately taking n plus 1 into n plus 1, which is near about n square space. So this is where this method is not appreciable because it ends up taking a lot of space. Thereby, this method is not used widely, but you can use this if the graph is a smaller graph. So if you check out the Java code for this adjacency matrix, you're given n and m, then you declare a matrix, then assume the input, the first thing they give you is 1 and 2, there's an edge between 1 and 2, you go to 1 and 2 and you mark it as 1, and you go to 2 and 1 and you mark it as 1. Similarly for these guys as well, like for every edge, you mark ij and ji as 1. So if there's an edge given like u and v, use adjacency of uv equal to 1 and adjacency of vu equal to 1. That's how you can easily store them in an adjacency matrix. So if you store them in a matrix, it is going to be costly, right? So this is where something like an adjacency list comes in. So what you do is, you define something like an array list. So I'll be something like array list, okay? And inside that, I'll also be storing an array list. So it'll be something like this. Array list, inside that, instead of integer, it will be another array list. This is what we will be defining. Okay. And the first step that you will check is, again, if it is one-based indexing. And if it is, then what you will do is, you will run a loop. Yes, you'll run a loop, and you will add exactly n plus 1 array list to this particular adjacency list. You'll add exactly n plus 1 array list to this adjacency list. So if you look at the code, I have defined an adjacency list, and then I've added exactly n plus 1 array list. If the code is visible to you, exactly n plus 1 array list have been added. So once it is added, how will it look like? So it will be something like, on the 0th index, there is an empty array list. On the first index, there's an empty array list. Second, third, and fourth. So on all these 5 indexes, you have an empty array list. Right? And what is our target? Remember this. Our target is, if I'm standing at the 4th array list, this 4th array list should contain 3, 2, 5. This 4th array list should contain 3, 2, 5. So every array list on an index should contain its neighbors. For 2, it should contain 4, 5, 1 in any order. That is what our target of array list will be. Okay. So what we will do is, if there is 1 and 2, for example, the first thing is 1 and 2. What I'll do is, I'll go to the array list of 1 and I'll say, please store 2. Please store 2. And similarly, 1 and 2 means 2 and 1. So I'll go to 2 and I'll say, store 1. Okay. For 1 and 3, I'll say, go to 1 and store 3. For 3, go and store 1. Perfect. For 2 and 4, I'll say 4, store 2. And I'll say 2, please store 4. Perfect. And for 3 and 4, I'll go to 3 and store 4. For 4, I'll store 3. For 2 and 5, 2 store 5, 5 store 2. For 4 and 5, 4 store 5, 5 store 4. So I can say all my array lists are completed. And for every guy, I have the neighbor nodes. I have the neighbor vertexes stored in this particular array list. So this is how you can store it in a list. So if you carefully observe, what is the space that you're using? If I ask you, what is the space that you're using? Now every edge has 2 nodes. Every edge has 2 nodes. And for every edge, you're storing 2 guys. Like for 1 and 2, you stored, for 1 you stored 2, and for 2 you stored 1, right? So twice. So I can say we go of twice of edges is what is the space complexity. Again, if you count, the number of edges were 6, and the space that you took was 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Exactly 12 is the space that you're taking. Yeah, this might be an extra stuff, but near about, you can say near about we go of 2m is the space that we are using. So if I go back to the code and if you see edge 1 and 2, you can carefully observe that I'm saying dot get 1, which means get the array list of 1. This means get the array list at the first index and please store 2 in it. Get the array list in the second index and please store 1 in it. This is how you store 1, 2.
So in short, you can say get of u, add v, get of v, add u for every uv that is given to you, right? And you want to print the graph, super simple. You just iterate and you can print all the edges. Yes, you can print all the edges connected, all the edges. Okay, this is how you can easily print this particular graph. Now,
I can guarantee once you start